Hello, everyone, and welcome back to another Chelsea Talks. I hope, first of all, you all are well and good. I know, as a Chelsea fan, we aren't feeling good, but overall, life is still a lot of things are. So I hope you are We well and don't good. have any other options. And I'm esteemed guest today, Ankit Bhai अरे from Almighty come Blues on. FC, Almighty Sports Plus. तो पहले तो यार वहां जाइए, do hit on the subscribe button there, like button, and Ankit Bhai कैसे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन थैंक्स अ लॉट यार श्रेया बुलाने के लिए यार। मतलब वी ऑलवेज़ टॉक और भाई चल एवरी डे। भाई कहीं न कहीं यार टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए एंड दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर हमने इकट्ठा करना है बहुत सारा चीज़ एंड देन वी हैव टू काइंड ऑफ मे बी ओमिट। आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड वे और बैड वे। हम वही ऑफ स्टेज बात कर रहे थे, पीपल आर वाचिंग दैट वी आर काइंड ऑफ वही बैक टू स्क्वायर वन वाला चीज़ एंड दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स लाइफ। बट यू नो व्हाट, एक चीज़ ज़रूर से बोलता हूँ, वाई ऑलवेज चेल्सी के बारे में बात करना अच्छा लगता है बिकॉज एज चेल्सी मैचेस, जैसे हमेशा हम वॉच अलॉन्ग में भी बात करते हैं ना श्रेय, आप बोर तो नहीं होंगे। देर इज समथिंग इन अदर ऑलवेज हैपनिंग, बी ड्रामा इन अ गुड वे और अ बैड वे, लेकिन होता है ड्रामा, तो देयर इज लॉट्स टू टॉक एंड दैट्स समथिंग व्हिच कीप्स अप एवरी डे फॉर अस एज चेल्सी फैंस करेंटली। So people, please hit on the like button and please subscribe to the channel if you haven't. And big up to Chelsea Perspective, great channel. Do go and subscribe to his channel. And hello guys, big up to Pudin Bhai as well, a big supporter of the channel as well. And Almighty Blues FC, Almighty Sports Plus, do go there and subscribe to Ankit Bhai channel. Some fantastic content up there. And I'm telling you, you have to go and subscribe. Some absolute beautiful content. And he just released a video 2 hours back as well. Fantastic video on Chelsea. So now coming on to the first topic today, just a bit of idea what we're going to talk about. First of all, we are going to have a chat on just a bit, on Everton match and what went wrong and where did everything go wrong. So first of all, going to Ankit Bhai. Ankit Bhai, we know we drew against Everton and idiot me, I predicted a 4-0 Chelsea victory and I should not have been this positive. Like in March, we beat Everton 4-2. हम हमेशा उनको 4-2, 4-1 हराते हैं, बट ये चेल्सी अलग है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये चेल्सी टीम ऐसी है कि अप्रैल में हमारी 40 पाउंड नहीं पूरी हुई, एवर्टन को हमने मार्च में हराया नहीं, पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड अंकित भाई होने वाला है। तो आपके क्या थॉट्स है एवर्टन के मैच पे? नहीं देखो, generally speaking, I don't think I was as disappointed, to be honest. हाँ, that feels like a loss. Definitely, it feels like a loss. No two ways about it. It feels like a loss. लेकिन आप देखो, मतलब हम जैसे खेल रहे थे in terms of the gameplay, everything. I think ज़्यादा positives थे than negatives, to be honest. मतलब particularly speaking, एक tuning हम देख रहे हैं that is kind of definitely moving on and doing better. गेम बाय गेम वो हो रहा है बिटवीन एंजो फर्नांडिस एंड जाओ फेलिक्स, टू ऑफ द न्यू साइनिंग्स। है ना, जाओ फेलिक्स अभी तक इज नॉट अ न्यू साइनिंग, बट वो एक मुझे लग रहा है दैट ट्यूनिंग इज काइंड ऑफ वर्किंग एवरी वीक, इट्स बेटर. Kovacic, after getting the armband, is doing better generally speaking. Then Reece James coming back from fitness yet in the game by definitely helps. Second half में again what a performance. Again Ben Chilwell wing back में अलग ही Ben Chilwell नजर आते हैं. तो there are a lot of positives. In fact मैं तो बोलता हूँ even Koulibaly एंड मैं बोलता हूँ इवन लाइक अदर प्लेयर्स आप देख लो, मोस्ट ऑफ देम मैं बोलूंगा वर पॉजिटिव टिल फॉर द फर्स्ट आवर. ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है, दैट इज एग्जैक्टली डीमोरलाइजिंग फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है, बिकॉज यस, जब 3 हफ्ते पहले हम बात किए थे, श्रेया, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, जब पॉटर ने किया था सब्स्टिट्यूशन अबाउट गैलेगर द फर्स्ट टाइम अराउंड, लाइक एज दो इज अ जॉन ओबी मिकेल. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आई अग्रीड. याद है हमने वी काइंड ऑफ डिसअग्रीड कपल ऑफ अस, जो मैं बात कर रहा था, बट उस समय क्यों मैं अग्री कर रहा था, क्योंकि चेल्सी वर इन द नो लो मोमेंट इन टर्म्स ऑफ द सीजन, बहुत लो मोमेंट थी. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर थिंकिंग अ लिटिल बिट नेगेटिव एंड एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द लीड, क्योंकि यार इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेलिगेशन फॉर्म था उस समय. ठीक है, अभी 3 हफ्ते हो गए, है ना. आई नो 2 ही wins were in the Premier League and 1 in Champions League, but those 3 wins on the trot were huge. So after that, when you're going 1-0 up, and when you have people like Mudryk, Madueke, and I'm not saying कि यार ऐसे नहीं बोल रहा कि वो शुरू करना चाहते थे, पुलिसिक का जो शुरू किया भाई पॉटर ने, आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव हिम द क्रेडिट, क्योंकि बंदा अच्छा किया है. बट व्हेन यू हैव दोस पीपल एंड देन आप कंसीड कर रहे हो विद सब्स्टिट्यूटिंग इन गैलेगर, सब्स्टिट्यूटिंग इन चुकुमेका एंड आरएलसी, अब वो लॉजिक कहीं का है नहीं. क्योंकि आप अगर इफ यू आर 1 goal बिहाइंड, माय फुटबॉल लॉजिक एंड वेरी बेसिक लॉजिक टेल्स दैट ऑपोजिशन विल अटैक एंड वुड वांट टू स्कोर 1 more goal, क्योंकि वो रेलेगेशन फाइट कर रही है, दे नीड एटलीस्ट अ पॉइंट मिनिमम, बेयर मिनिमम. दैट क्रिएट्स अ स्पेस इन बिहाइंड. और इन बिहाइंड अगर एक प्लेयर हमारे पूरे स्क्वाड में है, यस वो रेडी नहीं है, अभी भी प्रीमियर लीग सीख रहा है, ऑल दोस थिंग्स, बट इन बिहाइंड वाला जो वार्नर हुआ करता था पहले, अभी वी हैव मुड्रिक.
If such a player is not used even in that moment, तब आप लाए क्यों यार? Why have we got him? And हम आई नो बात करेंगे अबाउट ट्रांसफर्स, बट इफ हमें मुड्रिक नहीं चाहिए था, पॉटर को नहीं चाहिए था, बट ही शुड हैव बीन ब्रेव इनफ टू टेल दैट आई डोंट वांट। मे बी उस समय ऑपोजिट बोलते तो द फैक्ट इज ट्यूकल और बर्ली के बीच में कुछ जो हुआ, समथिंग लाइक दैट वुड बट अंकित हैपन। भाई, रियली सॉरी जस्ट टू कट इनसाइड, ये जो ट्रांसफर्स की बात है मैं पूरा एग्री करता हूँ। बट अंकित भाई इसमें यही बात है, जैसे जितनी भी साइनिंग्स अभी तक हुई है, मड्यूके, मुड्रिक, हम एंजो लेके आए थे जनवरी में, और पता नहीं कितने पूरी एक ट्रेन लेके आई है प्लेयर्स की। अंकित भाई इसमें यही बात है जो मुझे भी लगता है, इन माय ओपिनियन, दैट अ लॉट ऑफ साइनिंग्स आर बीइंग मेड बाय द स्काउट क्रिस्टोफर वाइबल एंड पाउल विस्टैनली। आई थिंक Chelsea are now become a club, and this is why they brought Graham Potter, a coach, a head coach, not a manager who will not demand signings. I think he knew straight away when Todd Boehly brought him that he's not going to have any say in the signings. I think if he wanted his way, he would have 100% brought Trossard. He will 100% have asked for Trossard. So I think he already knew, and it's just like he's in a fantastic environment, like बहुत बड़ा club Chelsea में is working on. So I think he won't complain. So I think he has to make this work, or else Todd Boehly will have to take a L. तो आपको ये लगता है कि भाई, इन योर ओपिनियन, दैट अ लॉट ऑफ साइनिंग्स बीइंग मेड आर फॉर द फ्यूचर, कि और मैनेजर्स आएंगे फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड एवरीथिंग, बट नॉट फॉर पॉटर? नहीं देखो, मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट, बट एट द सेम टाइम ट्रोसार्ड का तो सीन थोड़ा अलग था ना, बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक इफ आई रिमेंबर राइट, ट्रोसार्ड, याद है वो स्पर्स के साथ बात चल रही थी, एंड देन ही काइंड ऑफ पुट डाउन हिज टाल्स डाउन, और वो बोला कि नहीं यार मुझे जाना है। तो कहीं ना कहीं वो ऑफ पिच वाला मामला था, वेयर वी वर क्वेश्चनिंग फर्स्ट वेदर वी आर लुकिंग एट करंट और फ्यूचर। एक आई बिलीव टू बली प्रोजेक्ट एंड एंटायर चेल्सी का प्रोजेक्ट वाज द फ्यूचर, द वेयर ही डिडंट टिक मार्क। सेकेंडली, वो एक ऑफ फील्ड वाला इशू है कि डू यू वांट अ प्लेयर हु इज एक्चुअली पुटिंग डाउन हिज टाल दैट वे, दैट वे, और वो भी चेल्सी के लिए नहीं। तो वो थोड़ा क्वेश्चन है। नो मुड्रिक ने भी स्टोरी डाला था एंड ऑल दैट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बाद में पता ही लग गया कि मुड्रिक एक्चुअली वांटेड टू कम टू चेल्सी, जस्ट दैट बिकॉज ऑफ जिंचेंको वहां था, आर्सेनल वाला चीज। तो आई थिंक आई कैन सी व्हाई पॉटर वुड हैव गॉन, लेकिन अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको, चलो ठीक है, आपको ट्रोसार्ड भी नहीं चाहिए था, लेकिन मुड्रिक भी नहीं चाहिए था, तो आपको बोलना था ना कि मुड्रिक भी क्यों लाया आप, एंड दैट्स द पॉइंट। इट्स नॉट अबाउट हु, इट्स अबाउट व्हाई डिड यू गेट अ प्लेयर यू वांटेड। अगर आपको करना ही एक जॉन ओबी मिकेल टाइप प्लेयर चाहिए था, तो आप बेसिकली भाई जकारिया को आप खिला नहीं हो, आप बेसिकली किसी को और लाए नहीं हो जो बेसिकली एक प्रॉपर फिजिकल एलिमेंट इन मिडफील्ड है। आप रिलाई कर रहे हो कांटे को टू कम बैक फ्रॉम इंजरी रियली, और कांटे भी बेंच पर था, ही आल्सो डिड नॉट कम। सो अगेन, इवन द मैचेस दैट वी वन, श्रे एंड एवरीवन वाचिंग, भाई प्लीज लेट मी नो, लेकिन आई फील दैट हर एक मैच में पॉजिटिविटी आई है इन द लास्ट 1 मंथ, आई विल नॉट डिनाई, लेकिन इन दीज 3 वीक्स स्पेशली, ऑल द क्रिटिसिज्म इफ एनी वाज अबाउट सब्स्टिट्यूशंस। पर्सनल पिकिंग भी आप बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज आप जानते हो चैंपियंस लीग में फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव ओबामियांग इन द स्क्वाड। तो अगेन, अगर इतना एविडेंट था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉड बॉली, यहाँ पर टॉड बॉली एंड टीम की गलती है। यस, द गाय मस्ट हैव नॉट अप्लाइड हिमसेल्फ अंडर पॉटर। पॉटर ने क्लियरली बोला है इस मैच में भी, मैं सोचा था पहले जब हम प्री मैच कर रहे थे श्रेय ऑन माय चैनल, वी वर थिंकिंग दैट इज इंजर्ड। नो, पॉटर हैज क्लेरिफाइड दैट नहीं, ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन बट ही इज नॉट बीन पिक्ड, ओबामियांग। अब वो प्रीमियर लीग में अ प्लेयर, अगर आप लास्ट 3 साल में देखो तो ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप 6 स्कोरर्स द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 3 years। अंकित भाई, लाइक ही इज नॉट अ लिटरली बैड ये प्लेयर आउट ऑफ ओवरनाइट। सॉर्ट्स है। लाइक एक आपकी ना मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी जो आप कह रहे थे, जॉन ओबे मिकायल एंड कॉनर गैलेगर वाली। बट इन माय ओपिनियन अंकित भाई, व्हाट आई थिंक इज, मैंने कॉनर गैलेगर को भी देखा, आई नेवर थॉट दैट ग्राहम पॉटर वाज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट अ लो ब्लॉक। आई सॉ ग्राहम कॉनर गैलेगर ऑपोजिशन बॉक्स में ही इज प्रेसिंग द प्लेयर्स टू हाँ, एब्सोल्यूट डेप्थ। प्रेसिंग वाला वही ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से जॉन ओबी मिकेल, वो तो मजाक में बोल रहे थे। आई वुड से नहीं मोर नहीं, द आपका कांटे आइडिया सही है, कांटे। बट मेरे ख्याल से एक डिफरेंट टैक्टिक में यूज कर रहा है। अब वो क्या चाहता है ग्राहम हाँ, पॉटर तो सारी जो इज, कांटे के साथ ट्राई करते बेसिकली, या दैट इज व्हाट ही कांटे वाज वांट ट्राइंग। टू प्लेस ऑल अराउंड, बट द प्रॉब्लम इज, मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, यू कुड हैव ब्रॉट कॉर्नर गैलेगर। लाइक एक प्रॉपर मैनेजर क्या करता, एक प्रॉपर मैनेजर वुड हैव ब्रॉट कॉर्नर गैलेगर ऑन फॉर फेलिक्स, एंड ही वुड हैव टेकन अनदर अटैकर ऑफ लाइक प्यूलिसिच एंड ब्रॉट एग्जैक्टली। लॉफ्टस चीक ऑन। 3-5-2 खिलाते कॉर्नर गैलेगर, और आप फ्रंट में हावर्स को खिलाते यार और डिफेंस जकारिया है यार, जकारिया बेंच पर ही नहीं थे वापस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब दैट्स व्हाट बेंच आई एम पे नहीं सेइंग। थे। हाँ, और अंकित भाई गोल में सारे और कूलीबाली एक को और मैं ब्लेम कर रही बोलूंगा है। श्रेय, या एक और पॉइंट था लास्ट में भी यार, इफ यू नो, चुकुमेका केम ऑन राइट। हम क्या खुद चुको में का, क्रिटिसाइज कर रहे थे एक हफ्ते, टू वीक्स बैक, व्हाई इज चुकुमेका बीइंग यूज्ड इनफ, बट ही वाज नेवर अ स्टार्टर एनीवे। लेकिन उस समय तब था जब व्हेन वी डिड नॉट हैव एवरीवन अवेलेबल। अभी ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम माउंट एंड मे बी स्टर्लिंग, एंड नाउ व्हेन वी हैव पीपल अवेलेबल, आपको अगर चाहिए बेसिकली इन द एंड,
चलो कॉर्नर गैलेगर कैन प्ले बिहाइंड द स्ट्राइकर आल्सो, वो उसका है एबिलिटी टू प्ले एज द नंबर 8 नंबर 10, तो लेट हिम बी देयर। लेकिन साथ में आपको एक बंदा एक और चाहिए हु इज एक्चुअली अ प्रॉपर अटैकर। चुकुमेका इज नॉट या समवन जो आप रिलाई करोगे इफ यू हैव टू स्कोर दैट थर्ड गोल, अगर यहाँ पर एवर्टन स्कोर कर देती, यू नो व्हाट। नहीं, नहीं, वो एग्री तो करता हूँ आपसे अंकित भाई। पर यही है, चुकोमेका का भी मेरे को समझ नहीं आई। लाइक स्टार्टिंग में मेरे को याद है उससे सिटी के खिलाफ दिसंबर अराउंड में इतना अच्छा खेला था, फिर ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद आप सिर्फ उसको गिने चुने 2-2 3-3 मिनट दे रहे हो। लाइक उस दिन भी आप उसको 85th मिनट पे लेके आए हो। लाइक पॉटर की मेरे को समझ नहीं आ रही। लाइक आपका टाइमिंग, आइडिया यस। क्या है और गेम मैनेजमेंट क्या है? लाइक अगर अब मैं गोल की बात कर रहा था अंकित भाई, जैसे यहाँ पे पुडीन भाई ने बिल्कुल सही कहा है। लाइक बारिया शेले वाज इनविजिबल बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू हैंडल, लाइक ही वाज Yep, स्ट्रगलिंग विद yep. He डिवाइनी was ग्रे। like the old Kukurea, almost. Absolutely. And my another problem is Ankit bhai that I was when we saw the goal, like I saw the goal, I was thinking, yes, Koulibaly made an error and Kepa, I don't have to speak on him, like I've lost it. But where was Chaloba? Where was Trevor Chaloba at the right side? Like positioning की तो Hmm. मजाक बना के रख दिया. Like where is the positioning See, in midfield? तो उसी पर बेसिकली जो स्क्वाड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, कहीं ना कहीं वो है चालोबा, हमें पता है। देखो, वन थिंग दैट आई डू नॉट काइंड ऑफ अग्री, और रादर कोई भी मुझे बोले कि चालोबा इज नॉट अ फाइटर, मैं बिलीव ओ ही इज अ काइंड ऑफ गाई। एक चीज जो पहले एसोसिएट करते हैं चालोबा के साथ कि यार ही माइट नॉट हैव द क्वालिटी, लेकिन ही विल बी देयर। अब दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट, रे पुट अ वेरी गुड पॉइंट, एंड दैट टेल्स मी दैट मे बी चालोबा जब आए ना, इट वाज टू मी, आई नो फटीग बोला है फफाना का, फिर बाद में पता चला हैमस्ट्रिंग थोड़ा फील कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई इट्स कम ऑफ एंड इट्स प्रिकॉशनरी और व्हाटएवर। लेकिन मे बी फ्रॉम चालोबाज एंगल मुझे लगा कि मे बी पॉटर ने सब्स्टिट्यूशन के दौरान कम्युनिकेट नहीं किया होगा सही, और चालोबा सोच रहे हैं कि मे बी आई एम जस्ट कमिंग क्योंकि पॉटर मुझे खुश करना चाह रहे हैं। आई एम सिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि चालोबा भी आप देखो तो हार्डली खेला रिसेंटली, जिएश खेला नहीं अंकित भाई, मडुएके like he's been dropped. मुड्रिक, जब हार्डली प्लेड, तो ऐसे बंदे जब आते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन एक मिनट के लिए, तो इट्स नॉट इंस्पिरेशन, इट्स ऑलमोस्ट डीमोरलाइजिंग। कि जैसे मैं आई नो मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन भाई रोनाल्डो को जब ईटीएच वाज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन इन द लास्ट मिनट, Hmm. रिमेंबर? तो आई नो चालोबा इज नोवेयर क्लोज इन टर्म्स ऑफ दैट, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग यू टेंड टू थिंक दैट भाई ये क्या टाइम पास मेरे को खुश कराने के लिए 2 मिनट के लिए दे रहा है, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अंकित तो भाई उससे कॉन्ट्रैक्ट सबकॉन्शियसली एक्सटेंड यू करे थिंकिंग। नहीं नहीं, मैं आपको 2028 बोल रहा, तक। नहीं तो मैं क्या, आई एम जस्ट ट्राइंग इन द पॉइंट, सबकॉन्शियसली आप वो सोच रहे हो, तो उसके ऐसा नहीं कि चालोबा इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग इवन रोनाल्डो इज, लेकिन सबकॉन्शियसली ऐसा सोच रहे हो आप पिच पर, तो एग्जैक्टली उस मोमेंट का बात हो रहा है व्हेन दैट 22-year-old यंग स्ट्राइकर गॉट दैट बॉल। चालोबा फर्स्ट सेकंड के लिए भाई इतना कमिटेड नहीं थे दैट व्हाट ही वाज मे बी 6 months अगो, तो दैट 2 seconds लेट ही वाज बिहाइंड, तब कुलिबाली रियलाइज, ओ माय गॉड वेयर चालोबा। और कुलीबाली ने वो गलती किया कि भाई वो चालोबा का प्लेस जाने के लिए थोड़ा एक्सेलरेट करने लगे, एंड दैट वाज अ बिट टू बैड बिकॉज ही शुड हैव टेकन द नेगेटिव ऑप्शन फॉर अ चेंज एंड ही शुड हैव गॉन कम बैक, क्योंकि वहां डबल प्रोटेक्शन होता, उससे एक प्रोटेक्शन हुई और केपा को सरप्राइज मिल गया कि कोई नहीं है, एंड केपा की गलती ऑब्वियसली थी, तो चालोबा डेफिनेटली वाज एट फॉल्ट। बट आई वुड से दैट Koulibaly is experienced enough to know that basically if some other defender is not doing his job, let me actually do my job. अगर मैं वहां जाऊं तो यहाँ पर we are having a body shield who is already low on confidence in that moment. So I do not agree with that particular moment of Koulibaly more than Chalobah. And Aryan bhai, big up to Aryan bhai as well. I feel Aston Villa can definitely upset Chelsea. Like I never thought मैं अप्रैल में ये कहूंगा, but this is a derby or mid-table clash. 10th versus Yeah, 11th. yeah. Top half, bottom half वाला चीज है. क्या It's हमने shameful to say did that. we I ever agree. thought that we are going to be playing Aston Villa in a must-win match? हाँ, और एक्चुअली देखा जाए तो एस्टन विला का समर ट्रांसफर्स आर एक्चुअली गुड एंड दे हैव एन एमरी, तो आई डोंट थिंक इट्स मतलब ऐसे नहीं बोल सकता एस्टन विला लो ऑन क्वालिटी है, तो आई थिंक अगेन ऑली वॉटकिंस, मैम, आई एग्री विद द कमेंट, आई एग्री एंड विद द अंकित भाई एक कमेंट। टेबल भी नहीं है मेरे पास, लाइक एग्जैक्टली वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पर आई थिंक जब से एमरी आई है तब से आई थिंक उन्होंने लिटरली हमसे 10-15 पॉइंट ऊपर लिए। लाइक दे हैव बीन टॉप 5 टॉप 6 लीग में टीम अरे फॉर्म में। हाँ, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ क्लोज टू 10 पॉइंट्स, और अब अभी ऑन गोल डिफरेंस वी वर जस्ट अहेड, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अभी हम गोल डिफरेंस पे आ गए हैं। सो बैड, और अगर देखो। भाई ये पॉइंट मैं बोल रहा था लाइक इसमें मैं चलोबा को शायद डिफेंड करूं, पर इसमें मैं शायद आरएलसी को भी डिफेंड करूं। मैंने कहीं ना कि गोल में जब देखा ना, कहीं ना कि लॉफ्टस चीक जब पिच पे आए, कहीं ना कि प्लेयर्स को ना ये पता ही नहीं था गेम मैनेजमेंट में, प्लेयर्स डिड नॉट नो व्हिच पोजीशन दे हैव टू विच एक्वायर। पोजीशन, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, नहीं आई एग्री दैट इज द 100% विद यू। प्रॉब्लम अंकित भाई। लाइक मैं अंकित भाई नहीं को वही ना, क्योंकि लॉफ्टस चीक रिसेंट गेम में खेल रहा है राइट विंग बैक, ठीक है, एंड देन मे बी दे अस्यूम दैट, देखो वही ना, आप कम्युनिकेशन इज की, जो मैंने बोला, दो
जो चीज पॉटर और उसके असिस्टेंट ने बोला होगा चालोबा को और लॉफ्टस को वेल कमिंग, वेदर इट हैज बीन ट्रांसमिटेड करेक्टली टू देम फर्स्ट एंड देम टू कोवाचिच हु वाज द कैप्टन। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। कोवाचिच और कुलीबाली का कुछ मोमेंट हुआ था जस्ट बिफोर द गोल। Yeah. अभी खुलासा नहीं हुआ है क्या हुआ है। आई डोंट, इट माइट बी अ वेरी लिटिल थिंग, वो होता है फुटबॉल फील्ड में, किसी का भी हो सकता है। लेकिन हुआ हुआ क्या? अरे Big up Chelsea perspective. चेल्सी पर्सपेक्टिव मैन, व्हाट्स अप ब्रो, कोचिला, व्हाट्स अप, नाइस टू सी यू ब्रो, बिग अप टू चेल्सी पर्सपेक्टिव। Ankit out, interesting. What happened? All good. But anyway, but yeah, coming back to that, communication is the key. So see, again, a guy of emotional intelligence, degree, etc. I expect that that person would at least be good enough to be communicating well. और अगेन मतलब आप 2 दिन पहले बोल रहे विल ट्राई एंड गो इफ इन विन द चैंपियंस लीग, एंड देन यू आर चेंजिंग दैट ओन स्टेटमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, is he still brave enough to make that call early and communicate on the face of the players? Was he trying to make Chaloba happy in that moment? अब वो I don't know, again for Fofana injury is a thing, but let's see. And Ankit bhai, like this is the one I want to ask you, like from Ride with Me, why Mudrik is not getting a chance? Like Ankit bhai, आपने इसके बारे में पहले भी आंसर करा था। एक मैं इस पे लाइन बोलूंगा जो मुझे लगता है कि रीजन है why Mudrik is not getting chance. I think the simple way Mudrik is not getting chance for me is, first of all, I can do agree with Graham Potter, but he's lacking match sharpness, which because he did not play football from November. But also, I think the another reason is just Graham Potter does not know how to use a big squad. He does not know how to handle a big squad. Like Ankit Bhai right now has said a very, very good point. He's just trying to make happy. He's just trying to make everyone happy. He's only using Obama has to show, see, I have authority for a player which has not हाँ, caused क्योंकि any उसको trouble पता है so कि far. ओबामियांग रहने नहीं वाले anyway, right? रहने नहीं वाला. Kind of knows, and same चीज, like for example I'll tell you, David Atro Fofana, भाई बंदे ने Yeah, क्या गलती किया? He came on for 45 minutes in the Premier League and he did, arguably in that match he was the best among the worst, you can say, in that match जब चेल्सी relegation form में थी। तो उसके बाद he's been playing with under 21, ऐसा क्या कर दिया यार ट्रेनिंग में? मतलब the thing is, yes, you're right, 32 players handling them is not easy at all. That's a major issue at all. Like, but Modric का एक चीज मैं definitely defend करूंगा यहाँ पर Modric fans को। Mudrik played as a striker against Leicester, correct? More or yeah. less. ज़्यादा, I think for about 1 hour at least he was the striker position पे। तो उस पोजीशन में again he didn't do excellent, he didn't do bad either, मैं बोलूंगा it was okay, plus he got a technically a assist। तो you got to build on that, ठीक है? Don't give him 90 minutes, but start with him. You're breaking his confidence, or you're trying to basically say that, come on, I want to make others happy. Matlab, here we are fighting Everton, who are fighting for relegation. They, yes, low block bahut rakha tha for the good 1 hour. I know that very well. But when that low block is broken, that one moment of sharpness is needed, and that's where Modric actually, Exactly. as a striker, I would have seen in this game. मैंने actually preview में किया, आपने देखा ही होगा spray. I had actually Yeah. said I wanted Modric, Madueke, and actually Felix to be rested in this match, because I know he scored a goal, but Felix again has been playing a bit too much football, and that's what I was saying. And anyway, like you made a very, very good point. And before we go on to the next topic, I'll take some chats and then we'll finish off the Everton one. So first of all, thank you so much, brother. Hopefully we reach, but people do go to subscribe Chelsea Perspective channel as well. And please subscribe to Ankit Bhai's channel, Almighty Sports Press and Almighty Blues FC, given in the chat. And do hit the like button on the stream, people. It means a lot as well. And Chelsea perspective, I agree. Mudrik should have started against Everton to build on his confidence. For me, it's not even starting. Like you do not start him, but at least like a manager, what it does is like I saw Arteta do it, and a lot of managers do it. Tired legs. Everton players like you saw Tarkovsky's tackle. Commentator put it really well. Like that commentator, I can't remember his name, put it so well. Tired legs. You put Mudrik on in 70 minutes at least. You go to Mudrik and tell him run. Just run at those players. Sometimes you need to be proper headless chicken. But a Yes, manager did yes. not brought him. Like, what is the thinking and regarding that? and that reminds me actually, maybe मैं अलग से क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, टारकाउस्की, how did that guy did not get a yellow card? I have no idea. Matlab, I have no idea. Leave red card, by the yellow card, how did that Yeah, guy not get? For a good 60 minutes he deserved at least 2 yellow cards. But that is what games management is all about, even with players. Even on the first goal jahan par Dokore scored, remember Tarkowski actually won the ball against Koulibaly and Fofana. Now yeah. arguably if you put Tarkowski versus Koulibaly Bahubali, hum kyun bolte bhai, Koulibaly should win that. But you know why that ball was lost? Because I think यहाँ पर I'll blame, yes, it's easy to blame in hindsight, लेकिन I'll blame the management, the set piece expert, whoever it is. Again, we know that we Yes, suck at such Anthony, set I believe pieces. Anthony Barrow. मतलब we should be basically
not attacking spaces, and it's not, zonal management. Koulibaly was Tarkowski directly one on one hona chahiye tha. Why were half of Koulibaly and half of Fofana going for that ball? And that is an And you issue, remember the if Arsenal you have to match, see. like when Arsenal beat us 1 in at Stamford Bridge, Cucurella was marking Gabriel and Saliba. Exactly, man. It's so bad. But I would have actually been confident if Chilwell would have marked even Tarkowski. He's not too bad. He's underrated in terms of headers. लेकिन देखिए, for me, these little issues are repeating. आपको याद है तो I know it's not the same issue, but a set piece. Dortmund match, Adeyemi, the first leg. So these are something that you need to, as a viewer, as a fan, we are seeing it. Well, you are paid to do the job. As in, I know it's easy for us to say in hindsight, but these are things that are happening still. So that's an issue, because if you are seeing, I know, I'm again saying that doesn't mean Potter out today. I'm not in the Potter out yet, but I'm also saying, frankly, I don't see him as a long term manager either. वो भी frank है. Exactly. लेकिन अभी के लिए there's no point of sacking him right now, because there's nothing that we can gain. And yes, we are still 10, and we'll speak about that. लेकिन अगर आप, if you see the rest of the teams ना, I kind of boil यार, क्योंकि यार यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है. Just look at them, what they are, how they are bowling. I think And the we way need they're that going also. mentality. And Ankit bhai, just taking charge before we go on to the next topic, that is the topic I think people are going to love. And Preen bhai, take a question of that topic because I know you want to hear which match do we need to go after this. So, will Fofana be available for Real Madrid? He will be. Like Real Madrid match is like in a month's time. So I think he has like 10, हाँ, 11 days 3 weeks injury. So actually, yeah, I think he correct? will most probably be back Fofana by then. And Yeah, without yeah, Thiago it's Silva, वो ये precautionary था. It was not like a proper hamstring tear or I think something. he will It miss is. the international duty. The reports are coming with हाँ, तो France. he's resting for that reason, and hopefully he'll be fine in 3 weeks time. But yeah, he might actually miss even the game against Aston Villa, I feel. But let's Aston see. Villa, We'll yeah. talk about it. And without Thiago Silva, Fofana, I don't think he can manage Real Madrid. No, no, no. Pudin brother, like he थोड़ा सा negative हो गया because defensively we are solid team and Real Madrid is not Everton. So इतना बुरा नहीं हाल होने वाला है जितना आप कह रहे हैं. I don't think so in Yeah, any and way. see, देखिए, Chaloba is definitely not like a great defender, but he's not too bad either. Chaloba has been there, done that. Not ideal. I know against मुझे याद है last season it against Mane and Diaz, Chaloba was taken to shreds. I know that. But again, apart from that, I don't remember very many bad performances that Chaloba has put in. I don't actually. Same Angava, like he has been a very consistent performer. And Gaurav will come to the Mount topic later in the video. We'll have good discussion about that and a big news that has come for Chelsea. And to be honest, Potter is just a middle team manager. I think what Eric Ten Hag would have done, it's not even about what Eric Ten Hag would have done with the squad. One manager put his players on 11-kilometer run after losing to Brentford because Brentford ran around 11 kilometers more than their players. Our Hmm. manager gave players 2-3 days off because they lost a match against Southampton and Tottenham. Yeah, Mentality. and the boys are performing. Boys did well. The boys, the last played well. But anyway, bhai, he's a manager. We'll back him for now. जब तक he's a Chelsea manager, we have to back him, and let's hope for the best. I must say, And लेकिन now मतलब without being going to too the next negative, topic. हाँ, लेकिन मैं quickly, मतलब while we are talking about Potter, I'll just add on, like, just to end this. I feel that in the last 4 games that we have played better football. That I would definitely agree. Absolutely agree, Bhai. And Gaurav, I'll take your question when we talk about Real Madrid match later in the video. So now showing a bit of stats of Potter before I ask Ankit Bhai about this. And just see the stats, people. In Premier League, 28 points from 21 games. And out of all domestic cup competitions, losing to Manchester City 4-0 and 1-0. And we are in the quarter final. Hopefully, we do something big against Real Madrid. But the Premier League record, Ankit Bhai, 28 points from 21 games. My God. How do you feel In about this that, Ankit stat, bhai? no, मेरे लिए सबसे ज़्यादा डैम्पनिंग फैक्ट जो था ना, वो था कि वी आर आउट ऑफ ऑल कप कॉम्पिटिशन्स अपार्ट फ्रॉम द यूसीएल. So that is the most. And again, it's easy for people to say, "Come on, you met Man City." As in, yes, all due respect to Man City, they have been the best club in England in the last 5 years. But again, with all due respect to them, yeah, we have been the best club in England in the last 20 years. I would like to say. So that is the mentality that's needed. Yes, we had a lot of injuries जब हम Man City से मिले थे, especially in the FA Cup. Carabao Cup, चलो ठीक है, but FA Cup, I definitely wanted a better fight. And I remember clearly discussing it back then कि यार लुइस हॉल को जो कुछ ज्यादा ही वो बैक कर रहा था ना उस समय, बैक टू बैक, वो इतना बंदा यंग है, he kind of put him in the spot, and unfortunately one of the goals came directly from him. I remember clearly. And I think वो fight जो चाहिए थी for a cup game,
And that is why the main criticism of Potter is about substitutions and this mentality thing which is going in the backward direction. Because if yes, I agree that Chelsea are players are spoiled in terms of week in week out. हमारा mentality नहीं है what used to be under the John Terrys, the Drogbas, the Lampard, the Ashley Coles, the Michael Ballack and the Michael Essien. वो नहीं है Petr Cechs. लेकिन अभी जो difference है ना, we turn up for big nights. We turn up. We are supposed and we are known for it. We turn up on big nights, and big nights are what? Knockout ties. We did not turn up for FA Cup against Man City, and that being a manager, that's a very basic thing that you should do for if you're And a again, it's manager not of even Chelsea about Football that. Club. Like the point you've said, I fully agree. It's even about mentality. Like the problem is like here Gaurav Bhai has given a good one. Mentality coach came in, which ऐसा नहीं दिख रहा mentality coach का जो न्यूजीलैंड से highly rated वो highly. तो फालतूगिरी यार, to be honest, directly बोलूं, I don't think that makes any sense. By we are talking about, I know these are youngsters of 20, 25, 30 years of age. By at the end of the day, we are speaking about professionals who are earning 100 to 200k per week, and we are talking about Potter, who yes, he's not managed a big club, but come on, Premier League mein you face some pressure at every week. I don't know, you know what importance of an FA Cup is. So I would not buy that mentality coach wala bahana. And first of all, but yeah, you have a point, Gaurav, absolutely कि यार mentality coach आया plus वो on top of that और भी surprising है कि ऐसा क्यों. तो वही ना, sometimes that we discussed, too many cooks spoil the broth. कि Yeah, are there, मतलब is Potter having the voice that he actually needs to have? We don't know. Maybe exactly. supposedly Ruben Loftus-Cheek जो supposedly थोड़ा लीक कर रहा है information, that is the rumor in town, about थोड़ा बहुत news आता है, controversies आते हैं for whatever reason, जो मसाला ऐड करते हैं journalists about Chelsea. By that we need to ask someone like him that what is happening. But again, I am hoping and praying that it's not that. Because Potter, if he again claims himself to be the chief coach and not the manager, then it's an issue. Up designation एक चीज हो सकता है, but I think we should have. I hope he has full control and is using that control fully while on the training pitch. That is much more required. पता नहीं यार, ट्रेनिंग ग्राउंड्स फोटोज तो काफी अच्छे आते हैं, मतलब द वे दैट इट कम्स ऑलवेज, इवन द लिटिल दैट वी इज एक्सपोज्ड टू अस, इट कम्स गुड. लेकिन when it comes to the match again, matlab it reminded me, what, almost recent matches, except for the wins. Lampard country, remember there was a game against Sheffield United jahan par we should have easily closed that game 2-0 and they came back to Yeah, 2-2. 2-2. I think it was his first game Chelsea manager proper, like second home game. So that one basically he got in Billy Gilmore at that Yeah. point. वही those are certain moments that tells me that अभी भी वो naive manager थोड़ा Potter. And absolutely agree अंकित भाई. Like मेरे लिए पॉटर के साथ प्रॉब्लम यही है कि आई एम ऑल्सो नॉट पॉटर इन पॉटर आउट बिकॉज there's no benefit. Like there's no benefit being Potter out because he's going to stay till the end of the season and the new owners are more patient one. And Potter in also I'm not fully in because I think this guy can do a good job for us, but he gives me a bit of a vibe of a guy who's going to make us play some good football. We're going to beat some teams 5-1, 4-2, 3-1, 3-2. We're going to finish third. But Like I we are don't see not this going to manager matches as a war. मतलब वो as a Dortmund war and was an active. exception. Well, it's not seeming like we are going to matches that, okay, come on, every match, and it's a fact. Every match, in fact, every match was from 1st of February a must win, and still we lost a few matches, a good few, in fact. और अभी तो और भी must win है. तो हम वैसे क्यों नहीं जा रहे मैचेस को? Why is it that we are kind of, yes, मैं बहुत excited होता when we are finally scoring goals, but again, our defense is a question mark. Yes, कहीं ना कहीं Thiago Silva being out is also a factor, but it comes down to Potter and the management, the way we are setting up against set pieces, जो हमारा Achilles heel है. So there are a lot of question marks अभी still, I would say. Maybe rotation is happening a bit too much. अगर वैसा है तो भाई he should just clearly say Todd Bowley that okay, these guys don't exist and they should just play with the youngsters. They should not be around the squad if he's not able to handle it. And I think that's the biggest thing, like with Graham Potter. Before we end on Graham Potter, my thing is that I don't want to be in this Potter in Potter. My only problem with Graham Potter, I want him to improve. I want him to do well. But it's just like in our language we say, like अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. Like you had a good chance against Everton to build the momentum. You had a good chance to win the trust of the fans. And when everything was going fine, you again found a way to get it back. You cannot go with Chelsea in a mentality that yes, it's difficult, it's this and that. We already have had such a horrid season, and again and again your same old substitution. Like in the last two matches, the substitutions have been Conor Gallagher, Chukwuemeka, Trevor Chalobah, Loftus Cheek. Like you're telling me you don't have more plan. This is where your mind clicks on a 30-man squad. I have so many players. Boom, I can change the game.
Let me bring on Mudrik. Let me put him on Tarkowski. Let me put him on Cody. Let me stretch them. Let me stretch them to bits. Okay, I'll put Loftus Cheek to mark on Onana and not make him run. A manager himself has a sense that guys forget the set piece routine. My guy, you mark Tarkowski. Like, where is his mentality? Like from Graham यार Potter? That Godfrey was playing left back for Everton. yeah, Madueke is a one-on-one guy. Pulisic, agar it was working left hand side, it gives you that okay, chalo, why not Madueke there as well? You're playing at Stamford Bridge. पता नहीं यार मतलब there is a lot of मतलब see देखिए we are playing better football but bottom line being that his personal picks and his substitutions and timings of substitutions plus the things that he's saying publicly towards his players not questioning them these are 3-4 things जो questionable है जो मुझे बताता है that is he the right man question mark है अभी नहीं yes or नहीं बोलूंगा लेकिन question mark है absolutely. And just taking some chance before we go on to the next topic. Second end of the season and bring good manager before preseason. But पुरीन भाई बात वही है कि अगर हम उसे sack करना चाहते हैं, we wanted to sack Potter, we would have sacked him before the Leeds after the Tottenham defeat. Now I don't think until and unless our season goes absolutely bonkers, we finish 13th, 14th, he's not getting sacked. He will get a preseason. Bowley has put in 100 million investment in this guy. and 100 players million are I dollar. believe are with him Chilwell gave a statement अरे मैं so प्लेयर्स का players टैंक क्या प्लेयर्स स्टेटमेंट तो देते ही है लेकिन प्लेयर्स भी एंड में विनिंग ब्रीड करते हैं लाइक अगर सीजन पूरा अनरेवल होगा यही सेम प्लेयर्स होंगे जो विल बी अगेंस्ट हिम अभी हाँ क्योंकि that is of चैंपियंस course लीग है दे नहीं आर लेकिन विद हिम coming एंड out and saying Chilwell is the kind of guy I think वो I would like to trust him. Chilwell if he comes out and says that I kind of get that Chilwell बोला है Havertz बोला है बहुत लोग बोले हैं about that so I can buy that there's no point देखिए again we have a huge quarter final coming up in fact मतलब arguably I don't know मतलब it's actually it would have been easier to get to top 4 compared to जो हमारा जो bracket है with Real Madrid Man City and etc but देखते हैं उस पर we'll come to that. If yeah. And if Potter stays in next season, then that season also done. See, I won't say this thing, Gaurav, because anything is possible. Graham Potter can win us over. But my point will be that he will have a lot of pressure. Like, if next season we start with a defeat, I'm telling you, Stamford Bridge crowd is just gonna MTS get him out. Like, he has to start the next season well. He cannot come out with a 2-2 draw against Everton in August and say the last played well. I'm telling you, Stamford Bridge crowd is absolutely gonna नहीं go so that is the bonkers. only excuse he has that he does not have a proper preseason under him right वही excuse Exactly. है And if certain players give statement but they don't show on pitch, I think Gaurav Chilwell is showing it. To be honest, Chilwell is giving his everything on the pitch. Like he's one guy who has the mentality to succeed. Like if you listen to Chilwell's interview, वो हमेशा एक ही चीज कह रहा है. This is not a good position we are in. We और have to Kovacic do. actually Gaurav has a point Kovacic wasn't लेकिन up until he became the captain वहां पर पॉटर की प्रशंसा करनी पड़ेगी that yes I know it was quite obvious अगर Thiago Silva is out and Aspi is out it's obvious that you make either Kovacic or Kepa the captain लेकिन I think he's made Kovacic the captain so it tells me that and Kovacic के performances improve हुए in the last 3 games so fair enough. And Gaurav, I'm taking this chat just after this topic, and this topic is ended now. And now, going on the topic that's going to most probably decide the leftover season we have got. That is, no, first of all, let's talk about a bit riches on the Premier League. I'm sorry, Gaurav, I'll take a question. Ankit bhai, like, quickly chat on this because I know this is a bit depressing to see. So, before people can see people, this is our position in the Premier League table. Tottenham are fourth with 49 points, Newcastle fifth with 47, Liverpool sixth with 42, then Brighton 7, Brentford 8, Fulham 9, Chelsea 10. But see the golden opportunity we have missed. We could have beaten Everton, we could have been 9 points behind Tottenham and had a game in hand. Ankit bhai, like because of the draw now, it looks like any remaining hope, like tinka जो रह गया वो अब निकल चुका है. But I still want to try for Europa League spot. And because we have got Liverpool at Stamford Bridge on April the 4th, if we beat Villa, if we beat Liverpool and City lose to Liverpool, which is very possible, we can go above Liverpool in the table. So Ankit bhai, like, have you got any hope this season that we can go on to finish top 6 at least and play Europa League next season? होप इज द ओनली थिंग और कुछ है नहीं दैट्स द रियलिटी और कुछ है नहीं सच में अगर if I'm being realist chances are very less that Liverpool Newcastle Spurs and I'm not even talking about Fulham Brentford Brighton मतलब 6 teams we are talking about 6 teams to basically drop below us चांसेस आर वेरी लेस यस वी आर चेल्सी दैट्स व्हाई हम सोचते हैं कि हम हो जाएंगे यहाँ पर बहुत न्यूट्रल भी भाई ब्राइटन जस्ट स्कोर्ड 5 goals आई नो अगेंस्ट ग्रिम्सबी कल लेकिन दे जस्ट स्कोर्ड 5 goals एंड देयर सेकंड टीम इज काइंड ऑफ प्लेइंग बेटर देन अ फर्स्ट टीम एट टाइम्स वो लग रहा है मुझे
तो देखिए कहीं ना कहीं आई थिंक यस वी नीड टू बेसिकली ट्राई फॉर, मैं अग्री करता हूँ 100%, हमें चाहिए यूरोप। अब पीपल बोल रहे हैं कि यार नहीं, इट शुड बी लाइक द कॉन्टेस्ट सीजन जहां पर नो यूरोप, लाइक आर्टेटा इज हैविंग हैड इन फॉर लास्ट सीजन इफ आई रिमेंबर राइट। तो देयर आर सीजन जहां पर आप बोल सकते हो दैट यू वांट टू बिल्ड एंड यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर टीम। भाई एज अ फैन फर्स्टली आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज यार एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल आई डोंट लाइक दैट ऑनेस्टली। यस मैं सेल्फिश हूँ। और क्यों? क्योंकि भाई मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है टू सपोर्ट चेल्सी एंड डू व्हाट नॉट। श्रेयस जन, यू गाइस आर डूइंग लॉट्स। वी कैन नॉट डिजर्व टू गेम्स अ वीक यार फॉर चेल्सी। मैं तो बोलूंगा, मतलब आई एम स्पॉइल्ड ब्रैट बीट। अच्छा, वो जोक्स साइड, seriously speaking, 32 players right now. Even if we sell, you really think that we'll be able to sell the amount of people we want to sell? I don't think so. इतना easy नहीं है सेल करना। अगर हमें एल लेकर सेल करना है तब तो भाई अभी कर ले, अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर ले। हमने अभी क्यों नहीं किया? इफ यू आर एनीवे डूइंग दैट समर, एटलीस्ट विल सेव ऑन द सैलरी ना। यू नॉट डूइंग दैट राइट। सो इट्स नॉट easy to sell about 10 players in a window. It's not, trust me, it's not. क्योंकि हम बाई भी तो करने वाले, एटलीस्ट एक दो तो बाई करेंगे। I'm assuming, and we'll talk about that. Though I think to manage such a big squad, we need Europe. And for people saying we don't want Conference League, yes, I don't want to. मैं देख रहा हूँ, मैं cover भी कर रहा हूँ Conference League और Europa League wherever it's possible. And मैं कोई दो राय नहीं यार. We have won the Europa League twice, both the times we have played. But honestly speaking, it's nowhere close to Champions League football. ठीक है, बट फॉर अ स्क्वाड वी नीड यूरोप, वी सिंपली नीड यूरोप। इट्स नॉट एक्साइटिंग बट वी नीड यूरोप। अगर आप रियलिस्टिकली इफ यू पुट द टेबल अगेंस्ट ऑन द स्क्रीन, Yeah. I again feel even for Europa League spot it is very difficult. But Ankit bhai, That's the it is still realist in at me least talking. like being very honest, मुझे अभी ये लग रहा है कि शायद टॉटनहम न्यूकासल थोड़ी सी ज्यादा मेरे को फेवरेट लग रही है फॉर टॉप फोर। मुझे लगता है अगर हम लिवरपूल को स्टैम्फोर्ड ब्रिज में हरा दे एंड ब्राइटन भी नहीं हमें सिर्फ खेलना मैं है उस पर ही आ रहा था, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, लिवरपूल वाला जो पॉइंट बोल रहे हो ना आप। चेल्सी का ना, द प्लेयर्स हो गया, मीडिया हो गया, कोच हो गया, बहुत ही पता नहीं, बहुत ही अच्छे तरह से दे हैव एस्केप्ड समथिंग। एंड दिस इज आई एम ब्लेमिंग माय ओन क्लब हियर। इफ यू एक्चुअली सी आवर रिकॉर्ड अगेंस्ट द टॉप 10 साइड्स इन द लास्ट 10 months, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, एंड स्पेशली द टॉप 6, जस्ट लुक एट इट। भाई कुछ ना कुछ, या तो हम रेफरी को ब्लेम करते हैं, या तो कुछ होता है, आप बोलते हैं भाई दे प्लेड वेल, दे वर इन फॉर्म साइड, इट इज अ गुड पॉइंट अर्नड, घंटा गुड पॉइंट, सॉरी यार श्रेय, बट इट इज एब्सोल्युटली रबिश। And एग्रीड। do we have a Liverpool side which arguably was the worst side in the Premiership during the month of February? जनवरी। उस साइड के अगेंस्ट we couldn't score. हम्म। And I really, मतलब मुझे अगर पूछो तो now a Liverpool side which is slowly but surely improving, not every so much but हमने थोड़ा सा ग्राहम पॉटर में compared अंकित to भाई, Chelsea. हमने ग्राहम पॉटर में किसी भी टॉप 10 साइड को नहीं हराया। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इफ यू रियली आस्क मी, लिवरपूल वाला चीज मैं बहुत ही सरप्राइज, क्योंकि हम लोग क्या ना बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे देते हैं, अभी का बात नहीं, हमेशा से फॉर अ गुड वाइल चेल्सी वर नोन टू बी डूइंग वेल अंडर टुकल अगेंस्ट बिग टीम्स। अभी बिग उल्टा हो रहा टीम्स। है towards the end of Tuchel's reign and beginning of Potter's reign. Why we are now giving bit too much respect to the so-called good sides. मतलब again, it's a good side, लेकिन अगर record cannot lie for about 7-8 months, it cannot lie as a club under Tuchel भी towards the end as well as Potter मैं बोल रहा हूँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि यार जो I know we should be beating Liverpool and that is our only hope, लेकिन do I see that happening? Honest opinion अभी के लिए नहीं, things might change 2 weeks from now, let's see. And fully agreed, Ankit bhai. And just my opinion before we end this topic is, see, first of all, for me, Ankit bhai, why Europa League spot is very important, and Brighton for European spot very very possible. Put in by is very very possible. And if you don't get Europa, Potter out. For me, I will be Potter out, but if we don't get Europa, but I don't think this is going to be possible. Todd Bowley is never going to sack him until we are out of top 10. But I think the problem with Chelsea has been the mentality. Like Potter should at least have been told, my guy, you get Europa League football, because I don't understand that are these people a bit thick? They're not understanding next year. Like this is not the contest season. People इसमें mistake कर रहे हैं. कंटेंट हम्म। के मामले से भी मैं चाहूंगा चेल्सी 2 वीक खेले और वैसे भी अपनी टीम को अच्छा लगता है जितना ज्यादा दिखे, बट उसके अलावा भी अगर हम देखें ये कॉन्टे वाला सीजन नहीं है। वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दैट टाइम। लाइक वो एक अलग सीजन था, 10 था, दैट वाज अ फॉल्स पोजीशन। सारे 2-2 किलो बढ़ा के आए हुए थे खा पी के, दैट वाज अ फॉल्स पोजीशन। बट करेंट चेल्सी टीम नहीं जीती टाइटल। मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड, न्यूकैसल, टॉटनहम, लिवरपूल, क्या गारंटी हम नेक्स्ट सीजन टॉप 4 आएगी? अरे पर वी बहाने होते कैन। यार, हमारे पास बहाने होते हैं ना, ये मतलब हम सब हंसी उड़ाते हैं चेल्सी फैंस भाई, जो विच क्लॉप सेज ना कि यार पानी कम था, पिच खराब था एंड ऑल दोस थिंग्स। सच में बोलूं,
Chelsea have been like Chelsea players somewhere down the line, and Chelsea media bhai are kind of, or even managers recently, at least Potter has been basically giving a lot of Excuses. सो कॉल्ड टू मच रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे लिए बहुत बहाने हो रहे. तो आई थिंक जो कॉन्टे ने बोला ना इन हिज इंटरव्यू, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक, Oh लेकिन my कॉन्टे का जो God. रैंट था ना, उसने मेरा आँख खोल दिया यार सच में. मतलब मैं खुद बोल रहा था, फॉर पीपल हु आर वाचिंग मी यार ऑन माय चैनल, यू नो दैट, एंड श्रेय आल्सो हैव डिस्कस्ड लॉट्स. As much as I want to be positive and I should be positive, and we all should be positive as much as possible जब तक हो सके. The fact is, at the end of the day, we all forget. Bhai, Potter is on a huge contract. He's earning loads of cash, and so are our players. And I think these guys, मतलब again, social media ज़्यादा है, आई नो दीज डेज, विच इज समथिंग दैट एक पॉजिटिविटी लाने के लिए. बट द रियलिस्ट पिक्चर इज दैट, और जो प्रोजेक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ साइनिंग्स एक्सेट्रा, इतने सारे आप यंगस्टर्स ला दिए हो, और कहीं ना कहीं एक जॉर्जिनियो को दे दियो, और थियागो सिल्वा एंड एस्पिलिक्वेटा आर इंजर्ड, एंड देन ऑन द पिच देयर इज नो सीनियर पर्सन. Kepa, Kovacic, Koulibaly, would you say that those are really the leaders that we need who understand what Chelsea Football Club is? And as much as I love those guys as well to some extent, especially Kovacic, मैं बोलूंगा those are not the guys. So I think our planning in terms of not getting, मतलब somewhere down the line, again coming back to age factor, I think a lot of emphasis wrongly is being put by social media about that 30. I don't think 30 is bad. 30 is the prime of many people. Trossard Hmm. was in his prime. We should have gone for Trossard again. मतलब again, those are hindsight वाली चीजें. एंड अलॉन्ग विद अंकित भाई, मैं ये भी कहूंगा प्लेयर्स को भी एस्केप नहीं करना चाहिए. हमारे प्लेयर्स में एक मेंटालिटी भी है कि जैसे ही सीजन ओवर हो गया, लाइक जैसे आपने अंकित भाई स्ट्रीम के स्टार्ट में बोला था, दीज प्लेयर्स आर वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू कप कंपटीशन. लाइक दे सडनली अवेकन देमसेल्व्स, लाइक देयर इज अ डेविल इनसाइड देम, गुड डेविल दैट कम्स आउट इन दैट मैचेस. बट प्रीमियर लीग में इट्स लाइक जस्ट स्लीपिंग. इट्स लाइक नॉट एन इंपॉर्टेंट नहीं, मैच मैं लाइक. आई नो वी आर बीटिंग ऑन द बुश थे भाई, सब लोग आप ही बोलिए. आई अंडरस्टैंड इतना बड़ा स्क्वाड एंड ऑल दैट. शुडंट, इफ आई एम अ प्लेयर और मैं, मुझे अगर 5 मिनट मिल रहे, आई नो वो थोड़ा इजी है बोलना और करने से ज्यादा, जैसे गैलेगर दिखाते. गैलेगर, प्रॉब्लम इज दैट he's not too bad. People troll him. I don't think he deserves that. बंदा academy player of the year ऐसे ही टाइम पास नहीं बन गया था. He became Crystal Palace player of the year ऐसे नहीं. The guy is actually good. Problem is that you bring him on only for like 25, 15, 20 minutes every time. और उसमें basically he does a little bit more than what he's required to do. याद है Daniel Sturridge जब fit होता था in Chelsea, why या didn't he perform? Because we used to get Sturridge during Champions League season 2012 वैसे ही as a substitute just for 15 मिनट लास्ट में, और वो तो कुछ ज्यादा ही ट्राई करता था. So that is what happens. But if, but on the other side, you're also thinking that these guys are at that level for a reason, right? If you're getting even 15, 20 minutes, you want to see the best of them, and they have to give their best. Is that fight coming from the players, every player? Yes, some of them बहुत कर रहे हैं और 3 हफ्तों के लिए अच्छा किया, I agree, especially Dortmund game again. But Leeds, Leicester, Everton, we should have won all the 3 games without shadow of a doubt. Bottom line ये. agreed. And people, now before we go to next chat, I know we have ended as well. So कोहली वाले को सेल करना चाहिए. We have Colville. I think it's not about sell. गौरव भाई, एक हमारा पॉजिटिव है कि चेल्सी सेंटर बैक फ्यूचर इज वेरी सिक्योर्ड. कॉलविल, बारियाशेले, वेस्ली फुफाना, आई थिंक Yeah. ट्रेवर चलोबा, हमारे पास अच्छा यंग कोर है. और साथ में एक्सपीरियंस है कूली वाले, थियागो सिल्वा का. बहुत आसान है गौरव भाई कूली वाले को ब्लेम करना, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए ड्रेसिंग रूम में. लाइक मैं मानता हूँ वो मिस्टेक गंदी थी, बट कूली वाले पिछले 3 से 4 मैच में अच्छा खेले थे. कहीं ना कहीं जब एक हाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हाँ. ना प्लेयर्स की पोजीशन की, नहीं, वो even होगा in ही this होगा. match he played well. For 60 एग्जैक्टली minutes अंकित he भाई. was very good. एंड नाउ गौरव भाई, जो आप बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू प्रीव्यू द बिग मैच. प्रीव्यू नहीं, क्योंकि प्रीव्यू तो बाद में आएगा, बस एक चांस की, क्योंकि वही हमारा एक सीजन सेवर है. लाइक डू वी हैव द चांस अगेंस्ट रियल मैड्रिड? मैं सीजन सेवर भी नहीं कहूंगा, इवन इफ यू लूज, लेकिन अगर हम प्राइड से लूज करेंगे ना, फैंस माइट ट्रस्ट पॉटर. लेकिन अगर हम धो दिए गए ना, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ हिम. फैंस के लिए तो एंड हो Yeah. चुका, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ नहीं व्यू नहीं, से. you're right, एग्जैक्टली. मतलब आई थिंक दिस इज मेक और ब्रेक, और वो पता ही था हमें चैंपियंस लीग में, इवन डॉर्टमुंड वाले मैच में पता था दैट वी हैव टू गो एंड डू द अल्टीमेट वाला चीज. प्रॉब्लम था उस समय, हमें पता नहीं था हमने कौन सा दे मिलना है इन द क्वार्टर फाइनल्स. येट अगेन वी हैव टू विजिट सैंटियागो बर्नाब्यू, इस बार पहले, और देन बाद में स्टैमफोर्ड ब्रिज, व्हिच इज थोड़ा सा प्लस पॉइंट. लेकिन माइनस पॉइंट वापस से ये हो गया कि भाई कल रात को हमने देखा एल क्लासिको में रियल मैड्रिड हैज लॉस्ट, विच इज एक्चुअली, यस इन अ वे आप बोल सकते हो बार्सिलोना हमें एक ब्लूप्रिंट दे दी कैसे बीट करना रियल मैड्रिड को, बीटिंग थ्राइस. लेकिन ऑन द अदर हैंड, knowing Real Madrid and knowing the kind of side that Real Madrid is, mentality वाले, they will come back stronger.
एंड अगेन रिमेंबर, कोपा डेल रे सेकंड लेग हो जाएगा जब तक वी मीट रियल मैड्रिड. तो आई थिंक इफ दे लूज दैट एज वेल, आई थिंक मैंने दिया श्रेय, सिंगल डिजिट परसेंटेज चांसेस दे रहा हूं मैं चेल्सी को. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई वांट टू बी पॉजिटिव. मैंने खुद प्रेडिक्शन की थी टिल अबाउट 2 days बैक व्हेन द यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल ड्रॉ केम आउट. मैंने बोला था चेल्सी एज करेगी बिकॉज वी आर प्लेइंग सेकंड लेग एट होम. बट आफ्टर वाचिंग आई नो reactionary. Football is about reactions because things change so quickly. That is football. That is sport for you. लास्ट वीकेंड मैंने देखा चेल्सी का परफॉर्मेंस, मेंटालिटी, मैंने देखा रियल मैड्रिड नॉट डूइंग वेल. यस यू कैन, उनका भी नेगेटिव है तो उनका भी क्यों नहीं बोलोगे, लेकिन नोइंग रियल मैड्रिड, उनका डीएनए और उनके पास प्लेयर्स है जो चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं गियर. एंड दैट इज द डिफरेंस. वी डोंट हैव समवन लाइक अ करीम बेंजेमा, वी डोंट हैव समवन लाइक विनीसियस जूनियर. वी कुड हैव हैड, अगर अभी तक पॉटर का ये एम रहता कि भाई चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल तक वी आई वांट टू मेक श्योर दैट मुड्रिक कम्स बैक टू हिज प्रॉपर मैच फिटनेस एंड ही इज अ लीथल एलिमेंट, जो हम बोल रहे हैं फ्यूचर एम्बापे. आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज बट दैट इज व्हाट वी वांट. ही कुड हैव, बट कारवाहाल है थोड़े ससेप्टेबल. लेकिन अगेन, एम आई कॉन्फिडेंट ऑन दैट अगर लेकिन मुड्रिक लॉन्ग टर्म खेले. प्लानिंग नहीं है ना। ग्राहम पॉटर को वो हमेशा अपनी जॉब की चिंता कर रहा है कि ओ मेरे को ये मैच में ड्रॉ करना है, आई कैन सेव माय जॉब। तो कहीं ना कहीं अंकित भाई रियल मैड्रिड मैच में यही है, मैंने तभी ये पिक्चर भी डाली थी बिकॉज दिस इज एन हॉरर पिक्चर। विनीशियस जूनियर, करीम बेंजेमा और एक तरफ हमारा वन मैन आर्मी रीस जेम्स एंड देन एंचेलोटी वर्सेस पॉटर। अब यहीं पे लोगों की कंसर्न है, लाइक लास्ट ईयर जब हमने रियल को खेला था, लाइक पीपल को रिमेंबर करना पड़ेगा कि स्कोर्स में इतना डिफरेंस नहीं आया, बल्कि चेल्सी का स्कोर कहीं ना कहीं हैज इज बेटर देन द लास्ट ईयर स्कोर। मिडफील्ड में एंजो आ गया है, कांटे तक वापस आई ऑप्शंस जाएंगे, है, काफी ऑप्शंस है. यस बहुत आई एग्री. ऑप्शंस है। लेकिन लाइक आपके पास पूरी अटैकिंग ट्रियो बैठी है, मेड्यू के मुड्रिक, लाइक यू कैन चेंज द गेम इन इंस्टेंट इफ यू वांट। प्रॉब्लम यही है ना, एक तो मडवे के और ओबामेयांग को तो हम ले नहीं पाए इन यूसीएल स्क्वाड, दैट्स वन मोर प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पर आई थिंक गौरव चैट में है, गौरव को मैं याद करना चाहूंगा बिकॉज गौरव एक्चुअली रिमाइंडेड मी जब आप ड्रॉ निकला था ना. येलो कार्ड्स का। हाँ, येलो कार्ड्स वाला भाई, इतने सारे लोग हैं येलो कार्ड्स. तो वाइल वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड आई नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल दैट सबको मिल जाए येलो कार्ड, वो तो हो नहीं वाला. और अगेन इसमें अगर स्टार्टर्स में देख रहा हूँ, हुम एम आई सेइंग दैट 100% पॉटर के स्टार्टर्स है केपा, एंजो फर्नांडिस, रीस जेम्स, आर्ग्यूबली कुलिबाली डिपेंडिंग ऑन द इंजरी पर आई स्टेटस थिंक ऑफ थियागो थियागो सिल्वा विल बी सिल्वा. बैक बाय आई थिंक द फर्स्ट लेग, मतलब सबसे बड़ी हाँ, इसमें है लेकिन वी डोंट नो एंजो। येट, वी डोंट नो येट बिकॉज मैच फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग, राइट रे? तो एंजो एंड दैट्स अ जेम्स, डिफरेंट. क्योंकि मैं इस मैच में मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था, मुझे ये लगता है इफ पॉटर रियली टैक्टिकली स्मार्ट है, जो यही मुझे डर है, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि मैं रियल मैड्रिड का मैच देखूं और मैं मैच के बाद चाहे मान ले एग्जांपल के लिए कहते हैं हम शायद 2-3-1 एग्रीगेट पे हार गए, लेकिन मैं देखूं कि वी प्लेड वेल। लास्ट ईयर भी हम नॉकआउट हुए थे लेकिन वी हैड 50 शॉट्स टू रियल मैड्रिड 18 शॉट। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, आई एम ऑल देयर टू बैक पॉटर। मैं सिर्फ एक परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ जहां पे मुझे दिखे यस पॉटर बड़े बड़े मैनेजर से खेल सकते हैं, ये नहीं कि यार वाओ एंचेलोटी के साथ मैं मैच खेलो मेरी ड्रीम पूरी हो गई है। दैट शुड नॉट बी द केस। एंड अगेन भाई दिस इज व्हाई आई वांट टू आस्क यू, इज 3-5-2 with Enzo James, sorry, Enzo Kante and Kovacic with James Chilwell, is this the way to go against Real? और आपके फ्रंट टू कौन है अगर वो होगा, या आपको अभी भी लगता है कि हमें 3-4-3 ही जाना पड़ेगा इस मैच के लिए? नहीं देखो मतलब मैं ये चीज़ बोला था जब ड्रॉ निकले थे दैट कांटे इज गेटिंग क्लोज टू फिटनेस एंड ही वाज नेम्ड द मैच डे स्क्वाड. और द ओनली वे दैट आई सी कांटे पर आप रिलाई करो इज अगेन इफ यू प्ले अ 5 मैन मिडफील्ड. आई एग्री विद यू. इफ यू प्ले अ 3 मैन मिडफील्ड या 5 मैन मिडफील्ड, हाउएवर यू वांट टू से इट, राइट? आई एग्री विद दैट पॉइंट. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल ब्रेक है अभी, ठीक है? बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक देयर वाज वन गेम. Potter had a chance to at least give Kante that 15-20 minutes. He did not opt to do that. Realistically, for someone who's played football, by Shrey, you would know as well. I know it as well. People in the chat would know it as well. आप अगर 6 महीनों से प्रॉपर मैच नहीं खेले हो, no matter how good or bad you are, you need minutes. You need minutes. I see मतलब yes, Kante is definitely their element. Lekin firstly, I would like to see basically the people who are fitter. Yes, Kante is a better player, लेकिन I think who are playing and much more confident, they are playing first. तो मुझे नहीं लगता कांटे, अगर आप रिलाई कर रहे हो फॉर हिम टू स्टार्ट, यस ही माइट बी एन आंसर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता रियलिस्टिकली ही इज एन आंसर राइट नाउ. हाँ, देखते हैं क्या होता है अगेंस्ट एस्टन विला. आई रियली डाउट इफ विल स्टार्ट. मतलब आई वांटेड अ सिनेरियो जहां पर रियल मैड्रिड शुड नॉट बी द फर्स्ट मैच दैट ही स्टार्ट्स. आप सब्स्टिट्यूट लाओ 2 मैच के लिए और 2 मैच स्टार्ट दो, फिर रियल मैड्रिड खेलो. दैट इज द आइडियल सिनेरियो आई वांटेड.
और कांटे ही नहीं, मैं एक और मैं बोलना चाहूंगा, एस्पिलिक्वेटा। बहुत लोग बोल रहे फिनिश, यस फिनिश्ड इन टर्म्स ऑफ लेग्स, लेकिन आपको याद है 2021 की बात है ना, 2 साल पहले की बात है, बट एक्चुअली इवन इन दैट रियल मैड्रिड ट्राई, एवरीवन डिसएग्री दैट ही शुड हैव प्लेड, लेकिन एक्चुअली डिड अ गुड जॉब, ही प्लेड विंग बैक, तो ही डिड अ जॉब, अ प्रॉपर जॉब। तो हमें चाहिए कांटे एंड एस्पिलिक्वेटा काइंड ऑफ पीपल हु आर एबल टू डू दैट जॉब ऑन अ पर्टिकुलर प्लेयर, ठीक है, वैसे लोग चाहिए हमें। प्रॉब्लम है कि दोनों ही मैच फिट नहीं लग रहे मुझे अभी, Hmm. as things stand, and that's a huge issue. So I would actually go with whatever is working, or attacking wise we are doing quite good. I know defensive is the main element, especially the Bernabeu. लेकिन you have to hope and pray that Reece James doesn't get a yellow card or he's having his A game. और अगर आपको रखना ही है थोड़ा सा, तो आई डोंट नो, इंस्टेड ऑफ कोवाचिच आप शायद जा सकते हो समवन एल्स, बट आई रियली डाउट दैट विल हैपन बिकॉज कोवाचिच हैज हैड अ गुड गेम, इनफैक्ट 2-3 अच्छे गेम्स खेला है, और प्लस वो एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर भी है, मॉडरिच का गेम जानता Hmm. है, तो I think it makes sense to play Kovacic with Enzo Fernandez, who basically is magic Enzo Fernandez, लेकिन he needs to work in his defensive element. मैं क्या देखता हूँ that maybe we'll have like two people dropping back, जैसे हमने देखा था say for example against Dortmund. तो हमने Hmm. मैं वो देखता हूँ like a Kai Havertz doing more work rate वाला चीज in that Perfect. particular game. Again मैं तो बोलना चाहूंगा, as much as हम कांटे भी बोल रहे हैं, people are forgetting जो अब if you want someone to do a job, again, it's the wrong timing, but Mason Mount actually would have been very, very Agreed. useful in that game. This is a absolutely wonderful one, Ankit Bhai. Like Mason Mount gets a lot of criticism, but he was a massive part in that Bernabeu victory. He was like all over, but I think Mason Mount will work better in a front three. I know people might not like hear me. My lineup, I know this is gonna make my laugh. My lineup will be Kante, Enzo, and Kovacic in the midfield, and I will go with the two informer James Chilwell back three of Thiago Silva, Fofana at the right centre back. At the left centre back, for me in this game, we might need Cucurella because Real Madrid not Everton. We might need that pace, and I will go with Mason Mount and Kai Havertz to just absolutely berserk their midfield and attack with press, along with like Enzo. Like if we play 3-5-2, the good thing is in 3-5-2, Kovacic can play the sitter, Kante and Yes. Enzo can press from the front, and we can इसलिए have शायद वो four. पुलिस को खिला रहे हैं। आई थिंक मे बी ही फील्स दैट मेसन माउंट माइट नॉट बी इन द राइट फ्रेम Pulisic ऑफ की माइंड। pressing Ankit bhai is not spot on. Like Pulisic की जो नॉट press स्पॉट ऑन, energy है ना, लेकिन ही एटलीस्ट हैज बीन देयर डन दैट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, आई थिंक, अस्यूमिंग yeah. वो अगेन वो मेसन माउंट इज अ डिफरेंट एनिमल यार, उस पोजीशन में, पीपल ये फॉरगेट तो मैं एनीवे। बोलूंगा नहीं, ये तो कुछ अलग सा ही है, ये तो लाइक सारे प्राइम मिनिस्टर के नाम है। एंड अगेंस्ट मैड्रिड वी नीड टू डोमिनेट मिडफील्ड, सो वी प्ले मोर फील्डर। आई फुली एग्री। लाइक मिडफील्ड बैटल एक ऐसा बैटल है जो आई थिंक ये मैच डिसाइड करेगा, एंड दिस कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट एक पॉइंट मैं डिसएग्री करूंगा अंकल भाई आपसे कि मुझे लगता है हमारे पास इनफ मैचेस है कांटे को लाने के लिए। लाइक अप्रैल 1 को विला होम है, फिर लिवरपूल होम है, फिर हमारे पास वुल्व्स अवे है बिफोर मैड्रिड का क्लैश। अगर आपको आई नो। कांटे को फिट करना है, आप इन 3 मैचों में उसको 20 मिनट भी दे दीजिए, यू कैन मेक हिम फिट। बट अब पॉटर पे ये है कि वो क्या करेंगे। लाइक आई एम, लेकिन मेरे को स्टार्ट पता नहीं। करना रियल मैड्रिड में, सी दैट्स द थिंग, सी देयर इज अ डिफरेंस ना, बंदा स्टार्ट करता है और कमिंग ऑफ द बेंच, या वी ऑल नो यार, अगेन इफ यू प्लेड फुटबॉल यू नो दैट एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, आपको स्टार्ट करना इन अ चैंपियंस लीग गेम, यस वहां पर 5 सब्स्टिट्यूशंस है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक मोमेंटम हो जाता है ना इन टर्म्स ऑफ द वे वी आर प्लेइंग। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट कांटे एटलीस्ट, चलो 2 मैच नहीं, 1 मैच शुरू करता है पहले, कैन वी हैव हिम प्ले अगेंस्ट वुल्व्स, लेट्स सी। April 9th, I think that match is. So I think that should be more than enough time. Like it's around 3 weeks time. So I hope Kante is match fit by then. And नहीं, hopefully देखो वही मैं बोल रहा हूँ, इवन इफ यू प्ले श्रे, नोइंग कांटे का जो इंजरी हिस्ट्री है इन द लास्ट 6 मंथ्स, आई एम एक्चुअली Hmm. डाउटफुल कि वो बैक टू बैक मैचेस शुरू कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि यार एक गेम स्पेस होता ना, तो मे बी यार ही वुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड Yeah. विद कांटे, एस्पिलिक्वेटा एंड मेसन माउंट। आई डाउट दैट दीस थ्री विल बी फिट इनफ टू बट आई थिंक स्टार्ट। अगर अंकित भाई इस मैच में इम्प्रोवाइज करें ना, अगर हम पहले लेग में कांटे को ना खिला के एंजो कोवाचिच और माउंट को मिडफील्ड में खिला के सेकंड लेग हाँ, में मे कांटे बी, वापस आ जाए, बर्नेबो में मे रिजल्ट बी बचा ले, टू दैट वन इज, 1-0 और विन। जकारिया यार, जकारिया, आई डोंट माइंड हिम, नहीं। आई थिंक मैं राइदर मेसन माउंट के साथ जाऊंगा इस मैच। जकारिया इतनी बड़ी गेम है जिसको मैनेजर ने फिर से ड्रॉप कर दी कुछ टाइम से, वो एक रिस्क होगा मेरे नहीं पॉइंट नहीं, ऑफ व्यू से। उसको सब एक जॉब दो यार, आपको बेसिकली जो भी है कामाविंगा यार चौमनी, एक जन को पकड़ के रखना है बस, ताकि वो आपको स्पेशली ये नहीं लगता कामाविंगा कि अगर माउंट खेले। ज्यादा बढ़िया काम कर पाएगा उस रिकॉर्ड में, अटैक भी करेगा। हाँ, और प्लस माउंट का एक कामाविंगा के साथ हिस्ट्री भी है, रिमेंबर हमने खेला था रेन हम्म। के साथ, आई नो अगेन उस बात को 2.5 साल हो गए, लेकिन ही एक्चुअली पॉकेटेड कामाविंगा 2.5 years बैक, माउंट, सो देयर इज सम हिस्ट्री। एंड दानिश भाई, बिग अप टू दानिश भाई, इस बार आपने लॉन्ग टर्म दानिश भाई।
and almost 90% of time Real Madrid attack from the left. Do you think that might help Chelsea and Chilwell to exploit that offensively and get on the score sheet? आई थिंक अगर वो रियाल लेफ्ट से अटैक करते हैं तो मैं एग्री करता हूँ आपसे, पर अगर वो अटैक लेफ्ट से करते हैं तो जेम्स को स्पेस मिलेगी. दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर. एक सबसे पहली बात, चिलवेल तो दानिश में मैं कहूंगा चिलवेल तो थ्रेट कॉज करेगा, बट अगेन वही बात है कि अगर चिलवेल और जेम्स बॉम्ब फॉरवर्ड करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा कई बार. अब चैंपियंस लीग फाइनल में बहुत रन्स मारे चिलवेल ने विच सेव द टीम मारेस के खिलाफ, द ब्लॉक, द गोल्डन ब्लॉक, पर साथ साथ रूडिगर प्लेड लाइक एन एब्सोल्यूट बीस्ट उस दिन आपके मैं सारे वहीं पर डिफेंस. डर रहा हूँ यार श्रेय, जो दानिश बोल रहे हैं ना, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद कुकुरेया. आई नो रिसेंटली बेटर किया है, बट कुकुरेया अगेंस्ट वाल्वर्डे और रोड्रिगो ना, I'm actually लॉन्ग गेम. surprised that we don't have somehow Badishiri in the squad. लेकिन क्या कर सकते हैं? That's the reality. And this point is fully agreed. And before we leave this topic, because more topics have to be done and we have to end the video as well, it's been long video, so people do hit the like button and please go to Ankit by both the channel given the link and do subscribe to his channel as well as the channel Chelsea Perspective as well, who's in the chat. So coming on to Ankit Bhai, like I know predictions that are fast, so prediction we can't do, but just a simple question, like what do you want to see at least from the team, like where you can say yes, this is the reason I can really be happy with Graham Potter, like he has satisfied me. नहीं, अभी वो मोमेंट नहीं हुआ है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, येस आई नो वी नीड एन आइडेंटिटी एंड वी नीड अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, हमें चाहिए एक टीम केमिस्ट्री, हमें चाहिए लेस ऑफ फील्ड इश्यूज. दीज आर समथिंग्स व्हिच आर ऑब्वियस. लेकिन वो तब होगा जब देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर इन द सीजन, देन आई वुड लुक फॉर दोज थिंग्स. अगर वो तब भी रहता है फॉर वॉट एवर रीजन. लेकिन अभी वी हैव समथिंग टू प्ले फॉर इन द सीजन एंड दैट इज ऑब्वियसली द चैंपियंस लीग एंड टॉप 4, यू नो, टेक्निकली, जस्ट अबाउट टेक्निकली. तो I would, for me right now, I just need wins. खाली विंस Hmm. चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, सच में बोलूं. आई जस्ट नीड विंस, बीट अगली विंस, बीट गुड विंस, आई डोंट केयर Good राइट wins. नाउ. मुझे अभी चाहिए विंस बिकॉज आई थिंक इट्स इजी फॉर अस टू टॉक अबाउट प्रोग्रेस इन द प्रोसेस एंड ऑल दैट. भाई जब पूरा एक साल रहेगा ना, जब हमारे पास कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगा, इन इन केस we'll come back to this team and we'll remember we spoke about it, trust me. And now, because people is a lot of time, we'll quickly end it. I think this, Ankit bhai, on this, just quickly, I want to just ask you on this, like, Mason Mount will talk later in the next part because there's a news regarding Mason Mount. But on Joao Felix, David Raya, and Kuku, like, do you want to keep Joao Felix at the club at the cost of 80-90 million? And Kuku is done, so I think that's already done. But on David Raya, do you think he's a proper goalkeeper for us to replace Kepa Arrizabalaga? हाँ, तो मैंने एक्चुअली कीप सेल लोन वाला एक स्ट्रीम किया था, उसमें मतलब मी एंड माय ऑलमाइटी फैम वी डिसाइडेड दैट वी एक्चुअली गेट डेविड राया. साथ में हमने डिस्कस किया था. एंड जॉ फेलिक्स आल्सो वील लाइक टू इन्वेस्ट, ठीक है. प्लस इंकुंकू एनीवे आ रहे हैं. और उसका रीजन ये है कि यार विद जॉ फेलिक्स वो ट्यूनिंग दिख रही है, वो एक स्पार्क है उसमें, वो टर्न जो एक शार्प टर्न देता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव. वो प्लस द अदर थिंग्स दैट ही हैज, आई थिंक आर्गुबली यू कैन से दैट अगर लोग पूछ रहे थे मुझे फेलिक्स और माउंट में अगर एक ही ले सकते तो किसको लोगे, आई एक्चुअली वेंट फॉर फेलिक्स. आई थिंक आई एम दैट इम्प्रेस्ड विद हिम. यस, बंदा फिनिशर नहीं है, बट स्टिल आई फील दैट ओवरऑल, सच में बोले तो, ऑनेस्ट टू गॉड, ही इज अ बेटर प्लेयर, ठीक है. माउंट जो चीज करता है अलग चीज है, लेकिन साथ साथ में अगर आप देखो तो गोलकीपिंग का जो प्लेस है, आई वुड एक्चुअली, मैंने डिसएग्री किया था उस पर. मैं सोच रहा था कि यार नहीं, राया इज गुड, बट डज ही अपग्रेड केपा और मेंडी? आई हैव माय डाउट्स. अगर मैं जा रहा हूँ फॉर अ गोलकीपर, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ टॉप गोलकीपर. एंड इज दैट Exactly. अवेलेबल? नो. मेंडी, ही इज नॉट दैट, नोवेयर क्लोज. मिस्टेक्स है उसमें एब्सोल्युटली, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली. डर लगता है व्हेन ही प्लेज फॉर द बॉल एक्स्ट्रा, राइट. लेकिन आई थिंक ही हैज अ मोर रीच, वो प्लस पॉइंट ओवर केपा. केपा का उल्टा अलग चीज है, ही इज बेटर इन प्ले बॉल प्लेइंग. तो एंड डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन आर्ग्यू एज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव टू फाइट फॉर इट. अगेन, इफ यू हैव अ गोलकीपर जो अवेलेबल है हु इज बेटर देन देम. हम पिकफोर्ड से लिंक हुए थे आई थिंक अबाउट 2-3 मंथ्स बैक विंटर विंडो में, उसने एक्सटेंड कर दिया है. पिकफोर्ड इन माय पर्सनल ओपिनियन इज नॉट आइडियल ईदर, वो रेलिगेशन साइड से ज्यादा खेला है. लेकिन आई थिंक ही वुड हैव गिवन दैट अपग्रेड दैट आई वाज लुकिंग फॉर. I don't think Raya will give the. Raya is very good, don't get me wrong. लेकिन और I know बॉल प्लेइंग वाला चीज भी है, स्पेनिश कनेक्शन भी है. लेकिन आई फील दैट वही सेम चीज होगा. इफ यू आर एनीवे गेटिंग रिड ऑफ मेंडी एंड गेटिंग राया हु डजंट अंडरस्टैंड द क्लब, व्हाट डज इट मीन? मेंडी एटलीस्ट बाय 12 महीने पहले ही वाज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, Hmm. एटलीस्ट टेक्निकली And स्पीकिंग. it's just और like ही if वन you अस द really want to चैंपियंस लीग. sign someone, sign a top class player. Like there's no point spending 80-90 million on David Raya when Kepa is there. And
Kepa को we can't even और दो clear off. अलग और प्लान भी है ना। देखो आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, एक है बेटर बॉल प्लेयर, एक है बेटर शॉट स्टॉपर। तो फॉर मी आई वुड वांट टू हैव प्लान ए प्लान बी इन माय गोलकीपिंग ऑप्शंस। आई डोंट वांट मिरर इमेजेस। तो दैट्स माय पॉइंट। माइक मैग्नियन अवेलेबल है तो करे भाई, लेकिन Fantastic. एसी मिलान नहीं देने वाली भाई। नहीं देने वाली ना, मैं वही कहने वाला था, लेकिन माइक मैगनन पता नहीं है देगी मुझे। एसी मिलान, नहीं देगी एसी मिलान। लाइक गौरव भाई, दैट्स, अगर हमें वो लेना है ना, हमें एनजे जितना मनी देना पड़ेगा, एंड दैट ट्राई कर टू सकते हैं मच। गौरव, यू हैव अ पॉइंट, वी कैन ट्राई फॉर Yeah, श्योर। we can at least try because I think he's way better than David Raya. I think comparison भी नहीं है, Mike Magnan is one of the हाँ, best लेकिन right एक now. चीज जरूर यहाँ पर भी कैच है, हम ओनाना से भी बहुत लिंक थे, याद है तो प्रीवियसली। माइक मैग्नियन इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ। मेंडी का रिमेंबर Hmm, आफ्टर इंजरी जो हुआ था, एक सेटबैक, उसके बाद में हिज फॉर्म काइंड ऑफ डिप्ड। तो वी हैव टू सी माइक मैग्नियन का। अभी वो बोल रहा exactly. है इज बेटर कीपर दो, बट जुरी इज आउट अभी के लिए। And Joao Felix, Ankit bhai, do you want to keep him like 80-90 million में? इट्स वर्थ इट यार, क्योंकि यार कनेक्शन बनाना इज समथिंग, आप देख रहे हो जब इतना पर सारा जैसे चेंजेस एंकुकू होता है भी ना आ रहा तो। है, तो जैसे एंकुकू भी आ रहा है, तो क्या हाँ, तो फेलिक्स की मैं प्लेस बोल रहा बनी? वही मैं, आप अगर वो मैं बोल रहा था ना, जो कीप से लोन किए थे, सी वी में इधर प्ले अ 3-4-3 और 4-3-3, अस्यूमिंग लेट्स अस्यूम अभी के लिए पॉटर है। तो मुझे नहीं हम्म, लगता हम 4-2-3-1 जाएंगे। अगर 4-2-3-1 जाएंगे तो और भी बेटर है, क्योंकि 4-2-3-1 में यू कैन मैनेज 7 प्लेयर्स फॉर 4 पोजिशंस। ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, क्योंकि दैट इज नॉट सूटेड चेल्सी इन पॉटर्स रेलेगेशन टाइप ऑफ फॉर्म इन फेब्रुअरी। तो हम जाएंगे को क्या 3-4-3 या 4-3-3, एटलीस्ट टू बीइंग रेडी। तो उसमें फॉर दोस 3 पोजिशंस हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 7 पोजिशंस। आई नो बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना, बट वही ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। अगर वही चीज आप 4-3-3 करो, 3-4-3 से, तो जो आप वाइड मैन बोल रहे हो, दे कैन ऑल्सो प्ले नंबर 8। फॉर एग्जाम्पल मेसन माउंट एंड अ गैलेगर, और मे बी इवन अ काई हावर्ट्स एट टाइम्स कैन एक्चुअली प्ले नंबर 8 इन अ 4-3-3। हमने ट्राई नहीं किया इनफ, बट एक्चुअली इफ यू आस्क मी, गैलेगर और मेसन माउंट आर एक्चुअली नंबर 8 मोर देन नंबर 10। ठीक है, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन वो मैनेजेबल है। इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट है भाई। अगर अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज के दिन में प्लीज टेल मी यार भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, इन दोनों क्लब्स का एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड में ही है ना, उनके स्क्वाड साइज देखा, और अभी हमारा स्क्वाड बहुत बड़ा लग रहा है, यस फॉर टाइमिंग, बट इफ यू सी द लास्ट फ्यू इयर्स, आई रिमेंबर माटा फॉर एग्जांपल, ही सच अ ग्रेट प्लेयर, हार्डली प्लेड फुटबॉल यार, चार हम्म, पांच साल तक, और ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा हो गया था। आई एम जस्ट सेइंग। और वो ऐसा नहीं था बहुत, मतलब आई नो माटा माटा था, बहुत अच्छा बंदा है, एंड वो इश्यूज नहीं करेगा बैकग्राउंड में, आई नो, बट दैट इज देयर इज अ वे ऑफ मैनेजिंग। वी हैव मैनेज इन द पास्ट, वी शुड थिंक बिग, वी शुड थिंक हाई। और 5 सब्स्टिट्यूशन रूल है अभी। वी हैड अ टाइम यार, आई रिमेंबर द टाइम्स व्हेन जो कोल, माइकल बालाक, सोलोमन कलू, मलूडा, ये लोग बेंच से आते थे हाँ, हर मैच। दे शुड नॉट स्टार्ट, वी कैन मैनेज। पॉटर का जॉब है भाई वो मैनेज करना, यस। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वापस से 32 प्लेयर चाहिए, नहीं, लेकिन वो 3 पोजीशंस के लिए मैं बोल रहा हूँ 7 प्लेयर होना पॉसिबल है। स्पेशली जब आप हॉर्सेस और कोर्सेस खेल रहे हो, क्यों? क्योंकि 4-3-3 को सब मैचेस जहां पर यू नॉट प्लेइंग अ टॉप टीम, आई थिंक आई वुड लाइक टू गो 4-3-3। तो वहां पर यू एग्जैक्टली कैन अंकित भाई। हैव 5 पीपल यूटिलाइज ऑफ द 7 प्लेयर्स। तो आई थिंक हम क्या काउंट करें, इंकुंकू, फेलिक्स, मडुएके, मुड्रिक, माउंट, अगेन हेल्प मी आउट पीपल, दो और नेम्स मैं मिस कर रहा हूँ, बेसिकली गैलेगर उनको काउंट कर लो, और कौन एक और, काई हावर्ट्स। अच्छा, गैलेगर नहीं, एंड गैलेगर वुड बी अंकित मोर लाइक अ भाई, मैं मिडफील्ड, इसमें थोड़ा स्टर्लिंग। चैट से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नंबर 4-3-3 पे आजकल आप इसलिए पॉसिबल है कि फेलिक्स और हावर्स में मानता हूँ मोल एक नंबर 10 वो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, लेकिन एनकूकू नहीं मुझे लगता किसी एंगल से नंबर 10 है। मुझे लगता है एनकूकू बहुत इजीली आपके विंग्स पे या फॉल्स नाइन के रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे पर अंकित भाई, एक बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मुझे ये लगता है कि काय और जाओ फेलिक्स थोड़ा सा दोनों के दोनों कैन नॉट प्ले, दोनों के कैन दोनों नॉट को नहीं। स्टार्ट टुगेदर। जब इंकुंकू, या या यू राइट, जब इंकुंकू आ जाएंगे दे मे नॉट स्टार्ट, लेकिन अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, 4-3-3 में दे कैन, 3-4-3 में दे विल नॉट। भार्गव because बिगअप ब्रो, Bhargav Mason लेकिन Mount is done. And Bhargav, like I know right now you're top of the league, so we are just very don't go small with for you right clickbaits, now. don't go with clickbaits, that's all I would say. With all due But one respect thing to I will Mr. say is if Fabricio, Mason Mount is not done, he will stay with us. If he's done, we'll get 80-60 million pounds around. yeah, So, it's a 50-50, simple as that. I don't know why people assume कर रहे हैं यहाँ पर, I don't think and it's not anywhere gonna lie, I'm close to very happy done. with Chelsea draw. Bhargav, no disrespect, but we are in 10th, so we can't even challenge ourselves right now. हाँ, And नहीं, I think लेकिन डीके वाइब्स के we've कमेंट left को the वापस Wenger अगर stage. हाईलाइट कर सकते हो ना आप, एक एक सेकंड के लिए, आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट कमेंट। Which one? 4-3-3 पॉसिबल, डीके वाइब्स वाला 4-3-3 Yeah, yeah. पॉसिबल,
नहीं है भाई, अगर माउंट जाएगा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अस्यूमिंग माउंट जाएगा, व्हाई वी आर अस्यूमिंग आई डोंट नो। आई थिंक हमें कोशिश करना है, यस बाय द वे फुटबॉलिंग न्यूज़ ये है प्रॉपर दैट चेल्सी फुटबॉल क्लब इज ट्राइंग टू कीप मेसन माउंट, इट्स अबाउट हिम नॉट अग्रीइंग टू इट, दैट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो। और अभी पॉज दिया, इट्स नॉट द एंड, while Mason Mount is trying different things and coming back to Chelsea. These are the different things. And it'll come before leaving, he will let us know. वापस से एक conversation बाकी है, which will happen in my opinion. Anyway, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अस्यूमिंग अगर मेसन माउंट जाएगा तब भी आई थिंक वी कैन प्ले 4-3-3, व्हाई नॉट, बिकॉज आई लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लेन, रिमेंबर वी हैव अ गैलेगर और चुकुमेका एटसेट्रा, आई थिंक आर मोर नंबर 8, एंड्रे सैंटोस इज नंबर 8। आई थिंक प्रॉब्लम यही है, हम लिंक भी हो रहे नंबर 8 के साथ। एवरीथिंग टेल्स मी दैट against say mid table sides, against lower sides we will play 4-3-3, against top sides we'll go 3-4-3, everything tells me that. And I fully agree with this, Ankit Bhai. And got too many Chelsea fans. I think right now, I think Chelsea fans have gone beyond banter stage. Like we are in a stage where we just accepted that we just want to finish above 10th, and that's it. And a lot of time has gone, so we'll end it on the last topic that people have been asking about. And Potter's inexperience. We are putting by absolutely, yeah, but it's just about we have to accept it Putin by because he's going to be the manager, and Tuchel has the interchangeable players. And I think Tuchel, for me, he used to play a style for me. Like he used to do this, Ankit Bhai. Like if you can elaborate on this point, do you agree with this? नहीं मतलब अगेन मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट टूकल हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑप्शंस है हमारे पास काफी, इट्स जस्ट अबाउट यूजिंग देम वेल। अगेन आई माइट Hmm. नॉट बी सरप्राइज अगर चुकमे का लोन पर जाते हैं फॉर एग्जांपल, Andre Santos is going to get the work permit hopefully, so there's a lot of options, it's just about us getting that tuning between each other। इसलिए मैं जॉ फेलिक्स को बोल रहा हूँ कि रहो, क्योंकि फाइनली गेटिंग द ट्यूनिंग नाउ, अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच डजंट मेक सेंस, इसलिए जकारिया Yeah. के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं। And on No, he's Santos, not more of a DM. DK vibes, I he's think he's more more of a like a number number 8. eight. He can play number He's eight more of very a well number for 8. me. He's a Sasta Bellingham here. He can play number 6 like Bellingham, Exactly. but if you are really asking me, his number one position is number 8. He But he's gets a very actually good into the player, like a box and player we scores have to look goals. out for. A very good player, very good young player. Yes. And Ankit Bhai, the final topic to end where we will complete 2 points. One is Mason Mount, and the second one is the new link that are coming out now. People, again, I will say nobody knows, as Ankit Bhai has always said, the news, the biggest news that we have to agree is Mason Mount is finding the best thing for him. Chelsea want to keep him, but they won't increase the wages. These things can go either way. But we just should assume it's 50-50. He can stay, he can go. But Ankit Bhai, I just want to ask you two questions. First will be that do you think Mason Mount has to be kept anyway, anyhow, because the fan base is divided? And the second part is, if this is true, then is this the right profile of player we are going to replace Mason Mount? Yeah, as in my first question का answer तो हाँ, we should keep him anyhow. Yes, that means yes. Yes, मतलब that doesn't mean 300 की है वो सब, मतलब realistically speaking, हमें करना है middle ground लाना है, whatever be it, we have to get a middle ground, and whether it's 1 year contract, 2 year contract, for the time being बंद कर दो ये बातें और अभी क्लिक कर लो बस। Why? Because yes, मैंने बीच में बोला था that the only place that I want him to go is probably going to be Real Madrid kind of team where we all, with all due respect to my own club, yeah, Real Madrid, when it comes calling, we cannot say no. But Real Madrid now looks like Liverpool might not get Bellingham, and he might land up in Real Madrid. तो मुश्किल लग रहा है वहां पर भी। तो आई थिंक इंग्लैंड में आई कैन नॉट एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, भाई मैं तो देख नहीं पाऊंगा मेसन माउंट को किसिंग द बैच ऑफ लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैन सिटी। जब एंड फॉर मी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ओन लेजेंड यार, यहाँ पर आप देख सकते हो लैम्पार्ड का जर्सी है पीछे। और मैंने बहुत बार बोला भी लाइव कि यार फॉर मी द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट हैज डॉन द ब्लू कलर्स एवर, एंड आई मीन एवर, एंड विल बी, इज जॉन टेरी एंड नॉट फ्रैंक लैम्पार्ड। No disrespect, he's a legend. Lampard will remain a legend, but the fact that he actually wore the Man City colors, वो फैक्ट है, मैं आज तक शायद बोला नहीं हूँ कोई भी Exactly. स्ट्रीम में। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई पुट जॉन टेरी अबव फ्रैंक लैम्पार्ड, ओनली रीजन। दोनों आर आइडेंटिकल फॉर मी व्हाट दे हैव डन फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, लेकिन द फैक्ट इज जॉन टेरी उस मोमेंट में होता तो नहीं करता, आई नो दैट। Hmm. ठीक है, वो चीज बेसिकली आई डोंट वांट टू सी मेसन माउंट, और मेसन माउंट इज 24, आई डोंट एक्सपेक्ट मेसन माउंट टू से नो। फ्रैंक लैम्पार्ड गया था भाई 34 साल में, मेसन माउंट 24 साल का है। आई डोंट वांट टू सी Hmm. मेसन माउंट डूइंग दैट, तो आई नो हिज आंसर। एंड अगेन आप देख लो परेरा, यहाँ पर स्लोबोजदाई, Hmm. कमाडा, दीज आर द नेम्स व्हिच आर कमिंग थ्रू, डजंट मेक सेंस, इट डजंट ऐड अप। Hmm. क्योंकि अगर आप हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं व्हाई विल वी प्ले 4-3-3, इफ दैट इज द केस देन व्हाई आर वी गोइंग फॉर अ नंबर 8?
एंड्रे सैंटोस एग्जैक्टली। आने वाले हैं, चुकमे का ऑलरेडी है आपके पास, रूबन लॉफ्टस-चीक जो कोई लेना नहीं चाह रहा है अपार्ट और फ्रॉम मिलान कास्टेड जिसके आई। पास पैसे नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली गैलेगर, इतने सारे लोग हैं जो नंबर 8 से भाई, हैवर्ट्स और हम्म। खेल सकते हैं। तो अभी इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। अगर आप बोल रहे हो कि इतना सारा स्क्वाड है, आप 7 मेंबर्स आप नहीं मैनेज कर सकोगे फॉर 3 पोज़ीशंस एंड दैट इज़ व्हाई यू आर लेटिंग गो मेसन माउंट गो बिकॉज़ ही विल गेट यू 50 मिलियन एंड ही इज़ नॉट एग्रीइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। It doesn't हम्म। make sense to sign a replacement from Mount. It doesn't. एग्जैक्टली। It doesn't add लाइक up. अगर आप तुम रिप्लेसमेंट में लाइक मैं समझ लो डीएम साइन कर रहे हो वो अलग है, पर परेरा की कोई एग्जैक्टली सेंस ही नहीं हमें है। डीएम चाहिए ज्यादा, हमें स्ट्राइकर और डीएम चाहिए ज्यादा कंपेयर टू अ नंबर 8 एंड एग्जैक्टली। समवन लाइक डेक्लन राइस वाला एलिमेंट चाहिए हमें। और ऑल ऑफ अ सडन डेक्लन राइस के न्यूज नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ही हैड अ स्लाइटली लोअर सीजन, प्लस मेसन माउंट जा रहा है तो डेक्लन राइस क्यों आएगा? तो दिस इज ऑल लेजी जर्नलिज्म श्रेय भाई, मैं बोल रहा हूँ एवरीवन यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट वर्ड्स में, and being part of in and out indirectly I'm telling you एग्जैक्टली। that there are a lot of people in the media जिनका काम होता है ट्रांसफर विंडो खाली, उनका that is their bread and butter. तो do not एग्जैक्टली। jump on every news. Abhi the formal news is, even my man Fabricio, I am slightly disappointed in clear terms. Clickbait हो रहे हैं because they know Mason Mount का news is selling. They know things sell. That's why they put it. Formal news ये है that it's a impasse. यहाँ पर एक deadlock situation है. जब तक Mason Mount अपना personal situation sort out करते हुए the agents and all, we are saying just come back to us, we'll speak. That is the exact thing. I don't बट think there's ये a बात thing. से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि भाई लाइक मैं सब पालिनिया एक लाइक सेकंड। आई एम वन ऑफ मेसन माउंट बिगेस्ट फैन। लाइक मैं मेसन माउंट चाहता हूँ मेसन माउंट रहे एंड ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। लाइक मुझे लगता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता द वे ही प्लेड इन द चैंपियंस लीग रन। ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, आई लव हिम एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप हिम। बट दिस इज आई थिंक गौरव आई हैव टू डिसएग्री बिकॉज़ एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा लाइक क्यू माउंट इज सेलेबल। मैं बोलूंगा बहुत सारे प्लेयर्स हमारी टीम में सेलेबल है। हावर्स इज सेलेबल, फिलिक्स इज सेलेबल, माउंट इज सेलेबल। मैं तो वहां तक जाऊंगा इवन वी कैन सर्वाइव हिम विद थियागो सिल्वा। पर रीस जेम्स एक ऐसी पोजीशन है आपको मार्केट में रीस जेम्स जैसा राइट बैक नहीं मिलेगा जो एग्जैक्टली इतना तो क्योंकि फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो। डिमांड भी थी ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज है, सिंपल सा बात है। वी आर लेकिन मिरर गौरव का मैनचेस्टर सिटी। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वाई सिंह, यू नो वाई, मतलब हम 2 दिन पहले स्काई स्पोर्ट्स में रिमाइंड किया था, हाँ मेसन माउंट वाज वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर्स, आई थिंक दी टॉप गोल स्कोरर लास्ट सीजन वाज इट, या चेल्सी के ही लिए। वाज द बहुत हाईएस्ट स्कोरर फॉर चेल्सी बहुत गंदा नंबर है, फिर भी इट वाज अ फैक्ट, टाइड राइट? विद लुकाकू। नहीं तो what I'm trying to say, bottom line is, compared to maybe defenders, midfielders and strikers do get paid more. So I understand why. And I know Callum Hudson-Odoi को you can bring in the equation कि भाई उसको दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, and that is actually debatable क्योंकि Mason Mount ने numbers दिए हैं, so he deserves that. I actually would not totally disagree with Gaurav. मैं actually I'm on more of the agreeing side. लेकिन again Reece James का एक अलग शेल है यार, क्योंकि ही इज दैट, मतलब वर्ल्ड में इफ यू आर टेलिंग मी दैट ही इज अमंग द टॉप 2 राइट बैक्स, आई वुड टेक दैट। इज मेसन अमंग द टॉप 2 इन हिज पोजीशन इन द वर्ल्ड? नो। तो वो डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। एग्जैक्टली। लेकिन यार आई वांट टू एक्चुअली आई वांट यू टू हाईलाइट अ डीके वाइब्स। रिमेंबर हम ऑफ या ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, पहले वाला कमेंट डीके वाइब्स का, विच वन जस्ट दिस पहले वन? वाला कमेंट एग्जैक्टली ऑफ, हमने स्ट्रीम शुरू करने से पहले एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बोला था। या बहुत अच्छा पॉइंट है डीके वाइब्स का। पालिनिया मेक्स मोर सेंस, जर्नलिस्ट लर्न योर जॉब। अगर आपको स्टोरी बनाना भी है ना तो पालिनिया बोलो यार, ही इज अ डीएम। इट डजंट मेक सेंस, परेरा डजंट मेक सेंस टू मी, डजंट मेक सेंस। एग्जैक्टली तभी मैं लिंक से सरप्राइज था। बट अंकित भाई पता क्या है, चेल्सी जिस तरह चेल्सी की विंडो गई है ना, एनी लिंक इज नॉट इवन सरप्राइजिंग। लाइक जर्नलिज्म में लेजीनेस तो रहेगी बट टेक साथ इट विद द साथ पिंच ऑफ सॉल्ट। एग्जैक्टली। एंड बागा भाई प्यूलिसिच कंफर्म तो नहीं है बट क्योंकि हमारे पास लाइक लिटरली अभी 6 और 7 विंगर्स है, समवन विल हैव टू लीव। लाइक अगर प्यूलिसिच को गेम टाइम गारंटी होता है आई थिंक ही विल स्टे, इफ नॉट आई थिंक ही विल लीव। बट एक चीज करेक्ट। जरूर है जो मैंने पढ़ा है न्यूज में भी जो आता है कि ही लव्स चेल्सी, लाइक ही डजंट वांट टू गो बट गेम टाइम कुड बी अ मैसिव नहीं, फैक्टर। अंकित पुलिसिक भाई एक्चुअली सच में बोलो तो फॉर समवन हु लिव्ड इन नॉर्थ अमेरिका फॉर अ गुड व्हाइल, मैं खुद बोल सकता हूँ पुलिसिक ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ द फील्ड थिंग्स व्हिच चेल्सी प्रॉब्ली नीड एज अ क्लब इफ यू हैव टू ग्रो ग्लोबली। क्योंकि कहीं ना कहीं वी ऑल नो दैट हम, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल आई एम स्विमिंग आर इन इंडिया, बट जनरली मैं शेयर करता हूँ, श्रे नोज इट कि या there is still a set of fans for him. With all due respect, Barcelona, Real Madrid are the only clubs which exist. That is, and maybe Manchester United and Liverpool. These are 4. You know, in terms of social media and things like that, maybe Arsenal. ये 4-5 clubs लोग जानते हैं who do not watch week in week out वाला football. तो वहाँ पर Pulisic does a lot of things in terms of, you know, the off. Ankiत भाई I believe you have frozen. No problem people, Ankiत भाई will be back in some time, so taking a bit more chats.
And Jorginho was also a top scorer. Angabhai, yes, you are back now with 7-8 goals in 2020. And you guys have landed some minerals, as the young folks will say. So, Angabhai, like you were making a point, continue, Angabhai. People, Ankit will be back in some time. I believe a bit of connection is gone. So taking a bit more questions before we end it. And Jorginho was also top scorer with 7 to 8 goals in 2020. Fully agreed. And that only shows putting by the Chelsea's attacking patterns, the way we have done things, have not been in the right way. And without Paulinho, Fulham has struggled. And I think Bruno G is a fantastic midfielder. And Paulinho the same. I think Bruno is attackingly, creatively a bit much better. While Paulinho for me is much better defensively, but let's be honest, both are going to cost a lot of money, and Newcastle are on the upward trajectory, so they're never going to allow Bruno to go. The only player I think we can easily sign and easily get is more like Palhinha, but will Fulham sell him after 1 year? And do we sign him for 100 million, 90 million? That remains a question. And people forget Mount has played out of position almost throughout his Chelsea career, and his preferred position is number 8, but he still produced a GA. Because for me, Gaurabai, we used to play in a 3-4-3 where Mount was more close to the attacking department. So that is the formation which used to get the best out of him. Gaurabai, I understand your point that 4-3-3 is still the best formation he wants to play in. 4-3-3, sorry, but I think 3-4-3 has fully unlocked him. Like 3-4-3 has been the formation that fully unlocked him, and I think we should buy Tony in summer rather than go for Osimhen. But Gaurabai, Tony could be suspended. Tony could be suspended for 6-7 months. Gaurabai, and Ankit Bhai is back here, and we'll just see. And yeah, Ankit Bhai, Are you able to hear me? absolutely, Ankit Bhai. सॉरी just I've Yeah, been yeah, no problem. screaming much, so मेरा सिस्टम बोल रहा है भाई बंद कर दो बस लेकिन कोई नहीं. I think we're just going to end it like in just 1 or 2 minutes only. So your final point, Ankit Bhai, on Mount and overall, what are your final नहीं thing? Like we नहीं have to वॉट keep एवर him. इट टेक्स, अगर मैं मुझे इतना भी डायरेक्टली टर्म्स में बोलूं, इवन इफ जीशान नहीं, इवन इफ बेसिकली माउंट को कोई मिनट्स नहीं मिले खेलने के लिए, मैं तो रखना चाहूंगा. इतना जिद्दी हूं मैं तो माउंट के लिए. मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट इतने साल वेट किए फॉर वन ऑफ अ रन टू डू व्हाट इज ही. इट वाज नॉट जस्ट अनदर बर्ट्रेंड और नेथनाकी बाय द वे. आई रिग्रेट, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है. देन यू हैव क्रिश्चियनसन. दिस इज मेसन माउंट वी आर टॉकिंग अबाउट. आई थिंक आई डोंट ये भी जानता हूं कि ही विल नॉट बी अ स्टार्टर, बट उसको अगर बोला जाए भाई तो आधा मैच में स्टार्ट करेगा, आधा मैच में एज एन इम्पैक्ट सब आएगा. आई यू ओके? कम ऑन, दैट इज व्हाट वी नीड टू कन्विंस. वी आर चेल्सी फुटबॉल क्लब. यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम आज नया फुटबॉल क्लब नहीं है जहां पर हम बोल रहे हैं कि यार आप साइन करोगे तभी आप स्टार्ट करोगे. भाई मेसन माउंट अभी भी 24 साल का ही है. ही नीड्स टू रिस्पेक्ट अस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम एज वेल. तो मिडिल ग्राउंड कैन बी फाउंड आउट. प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है सोशल मीडिया में, जो सो कॉल्ड चेल्सी फैंस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर acting as though उन्होंने देखा है, Dennis Wises of the world, those guys need to learn and get a job, to be very honest. क्योंकि वो लोग अपने क्लिक बेट के चक्कर में एक यंग बंदा माउंट है जो बेसिकली सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उसका माइंड चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गुड. Exactly, Ankit Bhai, and my thoughts are the same. I think if yes, the club and him doesn't agree, then big up to him, and I will never have any bad things about him. Mason Mount is a fantastic young player, but seeing his leadership, and I still think that people might like it or not, he loves Chelsea and cares for Chelsea, and he still has attributes which could be so useful. So I will love to keep him, but again, as I always said, no player will come above the club. So if keeping him really puts wage bill and everything in trouble, then yes, he can leave. I'll always love him, but my first preference is always to keep him. And just ending with his last charge, should we let Harvest leave? More club want him. But Gaurav, this is the thing. We let him go, he becomes a superstar, and then we say, यार ये क्या कर दिया क्यों नहीं, जाने. सिंपल ओल्ड स्कूल फुटबॉल सैम एलरडाइज टैक्टिक बोलूँ तो यार मैं तो बोलता ही हूँ. मैं बहुत प्रोटेक्टिव होता हूँ हैवर्ट्स के लिए, लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन हैवर्ट्स टू बी ऑनेस्ट ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज हाइट. एट वन टाइम वी हैड बैलक, ड्रॉगबा, चेक, जॉनोबी मिकेल, Hmm. डेविड लुइस, भाई सब लोग थे जो इनके पास हाइट था. आज के दिन में हमारे पास हाइट की इश्यू है और हैवर्ट्स काइंड ऑफ हेल्प्स Hmm. दैट. इवन इन द लास्ट गेम जो पहला गोल था, ही ऑलमोस्ट क्लियर इट ऑफ द लाइन. तो दोज आर पीपल दैट आर रिक्वायर्ड. आई थिंक वी फॉरगेट ड्रॉगबा हैड अ लॉट ऑफ डिफेंसिव स्किल्स. आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन कहीं ना Hmm. कहीं स्क्वाड प्लेयर है. अगेन मैं बोल रहा हूँ हैवर्ट्स स्टार्टिंग 60% ऑफ द गेम्स, माउंट स्टार्टिंग 60% ऑफ द गेम्स, फेलिक्स, Nkunku are the important elements along with Enzo Fernandez and of course the defense. Exactly. And now, over fully agree with Ankit Bhai.
Just again, last bit comments before we end, people. So please hit the like button and go to Ankit Bhai channel, both the channel, and subscribe. And Jishan Bhai, good news for you is one thing I can guarantee you: Liverpool fans are overreacting with हमें Mason Mount नहीं चाहिए. He's gonna work in your system efficiently so well. So I think if he comes to you, I think you're having a fantastic player on your hands. And it's sad some Chelsea fans are trolling Mount. पुडिन भाई यही है, बट सिर्फ माउंट की बात नहीं, हमारे फैंस में हैबिट है सबको ट्रोल करना. अभी हमारे कई फैंस हैं जो थियागो सिल्वा को ट्रोल कर रहे थे जब हमने 2 या 3 क्लीन शीट्स रखी. तो चेल्सी फैन बेस में ये चीज एंड नहीं होती. पर जैसे अंकित भाई, मैं हम सब बैठे, वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मेसन माउंट और वो क्या ऑफर करते हैं. नहीं, बट नहीं, मैं यस. डायरेक्ट टर्म से बोलता हूँ ना, मतलब श्रेय, आई नो आई एम बीटिंग ऑन द बुश थोड़ा बहुत, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स ऑब्वियसली, लेकिन देयर आर पीपल दैट इट पेन्स मी टू से, देयर आर पीपल हुम आई पर्सनली नो. ये लोग बेसिकली ऐसे लोग हैं जो, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, टू बी ऑनेस्ट, दे क्लेम टू बी दैट they were not born when Dennis Wise used to play football, by the way. Uh, or they have no clue, to be very honest. सच में बोलता हूँ, and I respected them, and I will respect them. I will. लेकिन the way they say it ना, it's very clear to me कि they want to stand out in the crowd. उन्होंने शुरू किया था ये चीज, और वो चीज stand out in the crowd वाला जो चीज है, जो आप इतना जो पागलपत्ती से रैट रेस होता है ना, in terms of getting fame and getting clicks and getting YouTube views and whatnot, or Twitter views, that is what the entire idea was. It is simply, आप अगर माइनॉरिटी में होते हो, आपको सुना जाता है और लाइक, ओ रियली, एंड देन यू काइंड ऑफ ज्यादा बोल, और साथ साथ में बुरा टाइमिंग हो गया मेसन माउंट का, एक्चुअली परफॉर्मेंस बुरा था, तो दे काइंड ऑफ आर बिल्डिंग ऑन दैट, forgetting easily what he did for the last 4 years. Simple as that. Fully agreed, Ankit Bhai. And people, we discussed a lot of things today. We discussed a lot of topics. People who are joining right now, you can watch the whole video. Fantastic video with Ankit Bhai. We discussed everything in detail. And now I know it's gone long, too long, and now it's time to end. And big up to Pudin Bhai in the chat. And Deco was absolutely underrated for me. Big up to Pudin Bhai in the chat. Big up to Zishan Bhai. Big up to everyone. Gaurav Bhai. Big up to Chelsea Perspective. And everyone in the chat. Thank you so much, everyone, to join. And if we are not able to take any questions, we are very, very sorry now. It's too late in our time. So on just final thing before going to taking a bit of chat, what is the last wage should get amount of money? And thank you so much, Pudin Bhai. For me, I will love to offer 200k, but not more than that. And I'll go to Ankit Bhai on the same. Ankit Bhai, along with that, your final words and what will be your final wage to keep Mason Mount. हाँ नहीं, 200 I think is a good number. I think that's what you would go with. And अगर it takes us, अगर वो commit नहीं कर रहा for long term, I'm okay to sign him even for 1 year. कि भाई तू कर ले अभी, फिर सोचना how many chances you're getting. Maybe you can have a rethink. मतलब I don't know if you guys, everyone work, यार. I know I'm going on, लेकिन we all have been in jobs, and many of us have kind of have had short contracts, long contracts. भाई you kind of extend for the timing. चलो देखते हैं, भाई कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा. Simple. Just stop it, bro. As in, everyone, all the people, this is a call out for all the haters for Mason Mount. Bhai, this is someone who has loved the club more than you. You who is claiming to be, Chelsea fan even before Dennis Wise. Trust me, you know nothing about football. Mason Mount knows a lot about it, and so does the managers who have always picked him no matter what. He's a guy not in form, low on confidence. He's youngster. Thoda sa drift ho gaya hai. Yes, he's not a starter, but he is a team player. No matter what, अपना 100% देगा, and that is what you want to see. Keep him in the squad. फिर देखते long term में. But again, big up to everyone joining. Daren, भाई गौरव, आदित्य, जिशान, पुदिन भाई, जो भी लोग जुड़ रहे हैं ना, again hit that bell notification icon, very important, and do not forget to hit that like button as well. By the way, Shrey and me hopefully will be talking about cricket as well tomorrow. Let's see, we'll plan that. Exactly, and people do go and subscribe to Ankit by both the channel Almighty Blues FC, Almighty Sports Plus, and if we discuss about cricket, you'll see me on Almighty Sports Plus tomorrow. Do subscribe to Ankit by content, some fantastic, and hit the bell notification button there as well. And do like this stream and do subscribe. It means a lot. Hope you all have a great day. I'm sorry, Bhaka by everyone, if you're not able to take this question. Why is Poch never discussed? Only answer I'll give this because Poch is signed for 100 million, so there's no chance Potter can be sacked. So there's no point talking to more managers. And Poch, no, I don't think so. I think he's been criticized for this. I knew that was coming. So bigger to Bhaka Bhai, bigger to the chat. That's it. It's too late in the night, and thank you so much, Ankit Bhai. Like, he has been on the stream before and still has so much stamina. Love to be with Ankit Bhai, man. Absolutely. Do like. Hope you have a great day. Thank you so much, everyone.